सेशन टिके लंबा चली पारे each and every question पे 2 to 3 minutes hardly नबा नहले सेशन टी बहुत लंबा हो जिवो so kindly cooperate सेशन टी स्टार्ट करिया पूर्वरु मो किछिटा कहिबी कि करिवे कोन apart from discussion गोटे नोट कॉपी and pen जहाँ भी मु डिस्कस करिबी 12th अक्टोबर रे प्रिलिम्स हबा को जाउची less than 1 month रहिला so I would highly advise कि जहाँ भी डिस्कस हबो आ मु होप करची कि समस्तंकर स्टैटिक मल्टीपल टाइम्स रिवीजन सरी थिबो बा चाली थिबो सो जहाँ भी स्टैटिक नोट कॉपी रे आपनकर नाही जो पॉइंट गुडी को से गुडी को नोट डाउन करिवे आ पर क्वेश्चन मु किछिटा टाइम देबी 10 seconds to 15 seconds तो फर्स्ट अटेम्प्ट करिवे क्वेश्चन देन वी विल डिस्कस ठीक अछि ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन अछि which of the following best describes the concept of policy convergence in the context of national and state level policy making in India क्वेश्चन समस्त को शो होतिबो ऑप्शन चारिटी शो होउची तो सेठी देखि दियंतु ओके मोटी एडजस्ट करची क्वेश्चन समस्त पढिले एटा होची चारोटी ऑप्शन देइची फर्स्ट समस्त अटेम्प्ट करबे को चेष्टा करंतु First option कहला the increasing uniformity of policy outcomes across different states due to federal mandates. Second option कहिछि process by which states independently adopt similar policies over time often influenced by learning and competition. Third option कहिछि mandatory alignment of state level policies with the overarching national policy framework as dictated by the union government. The coordinated effort by multiple states to formulate a joint policy on a matter of shared interest. Discussion करिया पूर्व मु कहि दोची जे जेतेबेले भी ऑडियो की वीडियो रे किछि प्रॉब्लम हबो तो सेतेबेले संगे संगे मते जणाइबे ठीक अछि ओके आर आंसर कोन हबो एटी गोटे कांसेप्ट देछि पॉलिसी कन्वर्जेंस माने कोन व्हाट इज पॉलिसी कन्वर्जेंस पॉलिसी कन्वर्जेंस माने हला ओवर टाइम जो पॉलिसीज विभिन्न डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज रे जहाँ भी पॉलिसीज ओवर टाइम से गुड़ा सिमिलर देखा जाए किंतु इट दिस डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ फोर्स और मैंडेट नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स और मैंडेट तो सिमिलर जतबे फोर्स की मैंडेट जो से सिमिलर देखा जाउनी सिमिलर से कोथि पई देखा जाउची कि से माने परस्पर को एक्सपीरियंस रु से सिखु जंती दे आर ट्राइंग टू कॉपी द बेस्ट प्रैक्टिसेस ओके एंड से माने कम्पीट भी करूचंती टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ताको गवर्नेंस इंप्रूव करिवा पई फॉर एग्जांपल एठी हमें देखिबा कि बहुत इंडियन स्टेट्स अछंती जो माने कि इंडिपेंडेंटली तांकर डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल अछि ताको इंप्लीमेंट करबा को स्टार्ट करिसंती इंस्पायर्ड बाय द सेंट्रल स्कीम एंड द सक्सेसफुल स्टेट्स तो ऑप्शन नंबर ए कोन हबो जो कहिछि एटा रॉन्ग हबो increasing uniformity of policy outcomes due to federal mandates no mandates की force एटे यूज होनी b कोन कहिछि b the process by which states independently not due to force adopt similar policies over time often influenced by learning and competition एठी हमें डिस्कस कले ठीक अछि आ सी कोन पई रॉन्ग हबो कि सी कहला कि मैंडेटरी अलाइनमेंट ऑफ स्टेट लेवल पॉलिसीज विद द ओवरआर्चिंग नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क एज डिक्टेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट no force or mandated is being used in policy convergence
D, the coordinated effort by multiple states to formulate, no, this is not a coordinated effort to formulate a joint policy. एटा से माने परस्पर को बेस्ट प्रैक्टिसेस रु देखि कि सिखुछंती. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Second question, the right to food in India, while not explicitly stated as a fundamental right in part 3, कहिछि कि right to food, a right टी part 3 of the fundamental right रे एटा explicitly state हेइनी, किंतु constitution आकु interpret करिछि, it has been interpreted, Supreme Court interpret करिछि कि it is intrinsic to the fundamental right, not explicitly mentioned, but it is intrinsic to this. तो को फंडामेंटल राइट रे आसुची, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जोटा कि आर्टिकल 19, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओके, राइट टू फूड जोटा अछि सेटा कॉन्स्टिट्यूशन रे एक्सप्लिसिटली रिटन हे कि नाही, किंतु सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जजमेंट अछि, और से जजमेंट ता नोट डाउन करंदु, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 केस रे एटा इंटरप्रेट करा जाइथिला कि दिस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 और राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू बी प्रिसाइज ऑफ आर्टिकल 21. तो आर्टिकल 21 कौन कहे कि नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. According to what? Procedure established by law. समस्ते लक्ष्मीकांत रे एटा कवर करथिबे. ठीक अछि. तो इक्वालिटी एथिपाई इंपोर्टेंट, किंतु एटा रिलेटेड, इट इज नॉट रिलेटेड टू फूड. फ्रीडम ऑफ स्पीच एटा भी अनरिलेटेड. आंसर कोन बा? आंसर अब सी. रिमेडीज होचे आर्टिकल 32 कोन? आर्टिकल 32 होचे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जोटा कि गोटे वे दिए सिटीजन मानको टू अप्रोच कोर्ट्स जेते बेले तांकर राइट्स वायलेट हुए. तो इट इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट टू फूड. राइट टू फूड हमें एटू कोन जानिले कि एटा गोटे जुडिशियली डिराइव्ड राइट. दिस इज अ judicially derived right. आउ एटा कहार पार्ट? आर्टिकल 21 रो पार्ट, राइट टू लाइफ रो, जोटा कि एडी मु पर्टिकुलर केस रो नाटा भी कहिली, एटा को भी मने रखिबे. क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा. Consider the following statements regarding the formulation of national policy in India. किछिटा स्टेटमेंट देछि कि नेशनल पॉलिसी जेते बेले इंडिया रे फॉर्म हुए सेति पई कि इट टिपिकली बिगिंस विथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और नीड. The process invariably involves extensive consultations with all stakeholders before finalization. The Union Cabinet plays a significant role in its approval. Question टा statement टी जहाँ भी statement आउ option देछि ताकु तोरे 10 seconds रे पढंतु, तापर हमें आकु डिस्कस करिया. Read the question properly within 10 seconds. फास्ट कौन कहला कि जो पॉलिसी जेते बेले फॉर्म हुए, नेशनल पॉलिसी जेते बेले फॉर्म हुए, तार स्टेप 1 कोन कि कोन प्रॉब्लम ऑलरेडी अछि बा दरकार कोन ताको फर्स्ट आइडेंटिफाई करिबाटा. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जेते बेले प्रॉब्लम जणा नथिबो कि कोन पई सेटा दरकार, फॉर्मुलेशन जणा नथिबो, ताले पॉलिसी फॉर्मुलेशन केबे हेई परिबोनी. पॉलिसी फॉर्मुलेशन जनरली इट बिगिंस विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और नीड. फॉर एग्जांपल, जदि कि किछि गोटे नेशनल एक्शन प्लान बनैबार अछि क्लाइमेट उपरे, ताहाले प्रॉब्लम फर्स्ट आइडेंटिफाई करिया पड़िबो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड. ओके, तो एटा ठीक अछि. द प्रोसेस इनवेरिएबली इन्वॉल्व्स द एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स बिफोर फाइनलाइजेशन.
एटा भूल अछि काइना नॉट ऑलवेज बेले बेले किछिटा अर्जेंट पॉलिसीज थाए जेमति कि डिमोनेटाइजेशन हे गला इवन जीएसटी फ्रेमवर्क इनिशियली हे गला से गुडा को एक्सटेंसिव कंसल्टेशन थ्रू रु सेटा गति करे नै विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स it is true but it is not always true so eta bhul habo the union cabinet plays a significant role in its approval this is correct kana cabinet approval eta bahut essential before policy adoption the answer kon habo amaro answer habo 1 and 3 Fourth question, which of the following is key challenge in ensuring effective implementation of centrally sponsored scheme at the state level in India? Question te pacharichi कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अछि तांकर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एन्श्योर करिबारे कोन कोन प्रॉब्लम्स आसुची चारोटी प्रॉब्लम देछि व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस एट द स्टेट लेवल आंसर अब ऑल ऑफ द अबव केमिति फर्स्ट हम देखिए फर्स्ट एटा बुझो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कोन व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हैला जो फंड दरकार स्कीम रो इम्प्लीमेंटेशन पई कि ए जो फंड पार्टली सेंटर दबो एंड पार्टली स्टेट फंडेड हबो फॉर एग्जांपल मनरेगा हला बा आईसीडीएस हला त तार चैलेंजेस कोन आसुची लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एटा गोटे फर्स्ट चैलेंज केमती काइना स्टेट माने से माने ऑफन से माने कंप्लेन करंती कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहिची सेगुडी का तांकर फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट सेटा रिड्यूस करूची काहे कि ना सेमान को यूनियन रो गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करिया को पड़ुची सो इट इज लिविंग लिटिल रूम फॉर स्टेट स्पेसिफिक इनोवेशंस यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कीम डिजाइन मे नॉट सूट द डाइवर्स नीड ऑफ द स्टेट एबे कहली सेमानक पाखरे एतरा फ्लेक्सिबिलिटी रहूनी इंडिया डाइवर्स जोटा कि केरला पई वर्क करिवो मेनली सेटा बिहार पई कि नागालैंड पई वर्क न करि पारे तो यूनिफॉर्म टेम्पलेट्स हेलो 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 ଯେତେବେଳେ କହିବ ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଇ ଆସିବ ହାଲୋ କହୁନ ଏଇ ଦେଖ हेलो ବୁଝିଲ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସଲ କରି ଅନ୍ କରିବ କହୁନ କୁହ ହାଲୋ କହୁନ ଏଇ ଦେଖ टू एड्रेस हेलो यस कौन प्रॉब्लम अछि କେତେ ଜଣ ଏଇ मैडम नंबर 3 टा जो बीट 2 टा बुझियलन टिके अच्छा टिके से 2 टा काई के हबनी नंबर 3 रो ऑलवेज तो मैडम देइन सिटी The process invariably involves extensive consultation with all the stakeholders before finalization. एटा टिके डाइसी अछि this is not always true. मैडम सेटा ऑलवेज तो लिखिनी ना एटा हम बुझिया के पड़िबो ऑलवेज कोन कहउचंदी इनवेरिएबली लेखा हिति ना निरंतर सेटा ओह ऑलवेज ओह ओके हां ठीक तो है एटा सबु बळे नुहे अर्जेंट ओके पॉलिसीज रे सेटा इट डिडंट गो थ्रू द एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस जेमति कि थैंक यू मु मैडम कहली हां जीएसटी बुझियला हैला फॉर एग्जांपल थैंक यू फोरटा सरला डिस्कशन आउड स्टेटमेंट रहिला लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन तो एटा आंसर अब ऑल ऑफ द अबव all the three are the key challenges जो नंबर रे जो स्टेटमेंट ता बुझा पडुनी सेटा जत्ते बळे मु सेई एमसीक्यू पर्टिकुलर नंबर टी डिस्कस करछि सेटा सेते बळे ही पचार दियंतु ठीक अछि काना आजि क्वेश्चंस अधिका अछि तो जदि मु पुनी बैक जाई कि पुनी 1 नंबर कि 2 नंबर बुझौतिबी ताले 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पळेबो एटा सेशन ता सेति बळे पचारियो मु सेति बळे आउथरे 2-3 थर हेले भी मु ताको कहिबी ठीक है मैडम हां हां एटी कौन कला गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऊपर गोटे क्वेश्चन देइछि
Concept of cooperative federalism in India is often invoked in the context of policy making. Statement dala. Which of the following scenarios best exemplifies cooperative federalism? Question to read करो. चारटा जाक ऑप्शन रीड करो. The union government unilaterally imposing a national health policy on all states. It is wrong. एटा समस्त जानि परथिबे. एटा unilateral imposition नुह. आ unilateral imposition माने कोन सेटा cooperative federalism हे गला. ताको coercive federalism रे पळेबो से. Coercive federalism रे जिवो. So option A is incorrect. Supreme Court adjudicating a dispute between two states over water sharing. No. GST Council where union and state representatives jointly decide on tax rates and policies. एटा ठीक अछि. GST Council जोटा कि both union और state representatives को include करे, jointly decide करंती से माने कोन tax rates. For example, this is an example of cooperative federalism. एटा भी wrong अछि काहेकि President of India returning a state bill for reconsideration by the state legislature. President गोटे bill को return जेतबेले करंती सेटा गोटे constitutional procedure, not a federal cooperation. ठीक अछि. आ जो GST Council रहिला, GST Council एको चेयर किए करंती? Chaired by Union Finance Minister. Union Finance Minister. ठीक अछि. आंसर कोन हबो? आंसर हबो C. Question number 6 पढ़ो. Question number 6 कहिचे which of the following not जेतबेले MCQ जेतबेले सॉल्व करिवो सेतबेले देखिवो कि गोटे आसे not आउ थरे थरे करेक्ट जगह रे पचारथिबो not करेक्ट तो देखि कि सॉल्व करूथिबो. पिला बहुत मिस कर दियंती कीवर्ड्स. पचारला not a stage in policy cycle, not a typical stage in policy cycle at either the national or state level. गोटे होची policy formulation, policy implementation, policy litigation और policy evaluation. Policy cycle रा किछटा stages. तार first stage हैला policy cycle रा कि first गोटे agenda से माने set करिवे कि कौन प्रॉब्लम चलची ताको आइडेंटिफाई करिवे. मे बी फर्स्ट की सेकंड क्वेश्चन रे हमें ताको डिस्कस करिथिले. एजेंडा सेटिंग और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. तापरे कोन हबो? ड्राफ्टिंग बा डिजाइनिंग हबो. ताको पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहउछंती. पॉलिसी फॉर्मुलेशन हबो. तापरे पॉलिसी अडॉप्शन बा अप्रूवल stage. Approval stage आसीबो by cabinet or the legislature. तापरे कोन हबो? तापरे सेटा implement हबो. Implementation stage असला ministry, department, agency. Then evaluation. Evaluation माने जहा impact बा outcome तारो. Litigation ता it is not a part of the normal cycle. कोर्ट इंटरवेंशन सेटा हेई पारे जदी पॉलिसी चैलेंज हबो जोटा कि गोटे टिपिकल स्टेप नुह. सो दिस इज नॉट अ टिपिकल स्टेप. तो पॉलिसी साइकिल रे कोन आसुची? फॉर्मुलेशन आसुची, अडॉप्शन आसुची, इंप्लीमेंटेशन आसुची आ तारा इवैल्यूएशन आसुची. तो पॉलिसी लिटिगेशन एटा तारा गोटे डायरेक्ट स्टेप नुह. क्वेश्चन नंबर 7 समस्ते थरे ताको रीड करो. Consider a state government launching a new scheme for skill development among unemployed youth. Which of the following would be a crucial aspect of ensuring effective governance of this scheme? First option कहला
setting ambitious targets for enrollment without considering the existing infrastructure. B. Centralizing all decision-making authority within the state secretariat. Establishing clear monitoring mechanisms and accountability framework for implementation agendas. D. Primarily relying on external consultants for scheme design and execution. से पचारछि कि आ भितरु कोउटा गोटे क्रुशियल एस्पेक्ट हबो इफेक्टिव गवर्नेंस बनैबारे एन्श्योर करिबारे कि गोटे इफेक्टिव गवर्नेंस है परिबो ऑफ दिस स्कीम. तो इफेक्टिव गवर्नेंस माने कोन? इफेक्टिव गवर्नेंस होची implementation plus transparency plus accountability. ए तीनटे जाक जिंस एन्श्योर हेले ठीक से स्कीम ता इंप्लीमेंट होतिबो, ट्रांसपेरेंट थिबो आ जे इंप्लीमेंट करचंदी माने जे गवर्निंग बॉडी दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नड. ए तीनटा जाक जिंस एन्श्योर होतिले ताकू कुहा जिवो कि इफेक्टिव गवर्नेंस होची. तो ए रे कहला कि सेटिंग एम्बिशियस टारगेट फॉर एनरोलमेंट विदाउट कंसीडरिंग द एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. जदि टार्गेट सेट करा जाउतिबो विदाउट कैपेसिटी तो सेटा अनरियलिस्टिक हबो. तो सेटा कोन हि होची गोटे पुअर गवर्नेंस रो इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर गवर्नेंस रो एग्जांपल विदाउट कंसीडरिंग द एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, तो आंसर एटा हबनी. सेंट्रलाइजिंग ऑल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट. तो ओवर सेंट्रलाइजेशन रो कोन प्रॉब्लम हुए? ओवर सेंट्रलाइजेशन रो एटा हुए कि सेटा जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो लोकल एडेप्टेशन ताकू रिड्यूस कर दिए. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफेक्टिव गवर्नेंस. एस्टैब्लिशिंग क्लियर मॉनिटरिंग mechanisms and accountability frameworks for implementation agencies. Yes, monitoring plus accountability. आंसर हबो सी. ऑप्शन डी कोन पाई हबनी? ऑप्शन डी देइतला प्राइमरीली रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स फॉर स्कीम डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन. एक्सटर्नल कंसल्टेंट से माने हेल्प करि पारंदी किंतु से माने लोकल ओनरशिप को से माने रिप्लेस करि परिबेनी. तो जो गवर्नेंस रो कोर रहउची, कोर ऑफ गवर्नेंस सेटा कहा ऊपर रिलाय करूची? सेटा अकाउंटेबिलिटी ऊपर रिलाय करूची. केते दूर जाय गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट तो सिटीजन मानक पई ता ऊपर लोक मानक पई ता ऊपर रिलाय करूची. सिटीजन पार्टिसिपेशन ऊपर रिलाय करूची एंड एफिशिएंसी ऊपर रिलाय करूची. ठीक अछि, आंसर कोन बा? आंसर बा सी. Read question number 8. Consider the following statements regarding the intersection of public policy and rights issues concerning the vulnerable sections. First, कहला public policies they are always designed to uphold the fundamental rights of all sections of society, all sections of society. Effectiveness of a public policy in addressing rights issues is solely dependent on its legislative intent. Social audits can play a crucial role in assessing the impact of public policies on the rights of the marginalized communities. को स्टेटमेंट अभी तो ठीक होगा? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखिबा. फर्स्ट स्टेटमेंट कहले कि जो पब्लिक पॉलिसी जो रहिला से गुडी को they are designed to uphold the fundamental rights of all the sections. सब जगह सेक्शन जे जतिको भी रहिले सोसाइटी रे तांकर फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करिया पई फॉर्मुलेट होची जोटा कि रॉन्ग. पॉलिसीज मे बी poorly designed or even exclusionary. किछिटा सेक्शन को से एक्सक्लूड भी करि परिबो तो एटा रॉन्ग हे जिवो. Effectiveness of a public policy in addressing rights issues is solely dependent on its legislative intent. काहेकि ना जो implementation monitoring social audit भी सेगुडा भी मैटर करूची.
So this is not solely or only dependent on its legislative intent. Social audit can play option देखा जाउनी कि 80 option 1 only 3 only 1 and 2 2 and 3 अछि तो 1 and 2 जेतल कटि जाउची हम पाखरे गोटिया ऑप्शन रहउची बट हम स्टिल थर्ड स्टेटमेंट भी डिस्कस करबा सोशल ऑडिट कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज ऑन द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी दिस इज जनरलाइज्ड आ एटा सोशल ऑडिट जो रहिला जेमती अंडर मनरेगा हे गला सी फॉर एग्जांपल social audits under MG नरेगा जो हैला से कौन करछि से it is allowing the villagers to check the records or ensuring entitlements okay ensuring entitlements are delivered the policy intent केवल एकाकी सेटा sufficient नुए ground level accountability is key and social audit can definitely play a crucial role in assessing the impact of public policies on rights of marginalized communities answer about B option number 3 now number question which of the following principle is most directly related to ensuring equitable access to public schemes and policies for all sections of society particularly those facing the historical disadvantages question जे पचारची कि आ भितर को प्रिंसिपल जोटा कि डायरेक्टली रिलेटेड इन एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक स्कीम और पॉलिसी for all the sections of society all sections of society particularly जो माने कि historical disadvantages face करूछन ऑप्शन कहला रूल ऑफ लॉ अफर्मेटिव एक्शन फिस्कल फेडरलिज्म आउ प्रोसीजरल जस्टिस फर्स्ट हमें देखिबा कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ ए चारोटी जिंस जणा थिबा दरकार रूल ऑफ लॉ कोन एटा होची इक्वालिटी बिफोर लॉ किंतु एटा इट डजंट एड्रेस द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस ठीक अछि अफर्मेटिव एक्शन कोन अफर्मेटिव एक्शन होची किछि प्रोविजन निया जाई थाए किछि स्पेशल प्रोविजंस जोड़ा कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स मानन को पई निया जाई थाए टू एंश्योर व्हाट टू एंश्योर इक्विटी फॉर एग्जांपल कोन जेमति कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन और जॉब्स हला एससी एसटी सब प्लान से गला ताको कुहा जाय अफर्मेटिव एक्शन द आंसर कोन हबो अफर्मेटिव एक्शन व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म होची कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस होबो नॉट डायरेक्टली अबाउट इक्विटी इट सेज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस it is not directly related to equity procedural justice kono eta hoche fairness of process procedural justice means fairness of process not corrective measure answer about affirmative action question number 10 the concept of governance in the context of addressing rights issues concerning various sections of society encompasses first option first statement the formal legal and institutional frameworks second process and mechanisms for citizen participation and accountability third ethical values and norms that guide the actions of state and non-state actors ऑप्शन 80 तळे देइची 1 and 2 2 3 1 2 1 3 1 2 3 क्वेश्चन ता पढो भलो करी गवर्नेंस कहले कोन बुझुची हमें गवर्नेंस इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन गवर्नमेंट केमती कहीं ना एथिरे केवल इंस्टीट्यूशंस आसुनी गवर्नेंस रे कोन आसे इट कवर्स लॉज इंस्टीट्यूशंस सिटीजन इन्वॉल्वमेंट भी एथिरे आसुची
जेमती आरटीआई हे गला ग्राम सभा हला एंड किछिटा वैल्यूज भी आसुची जेमती ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंक्लूसिवनेस फॉर एग्जांपल जेमती की राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इट रिक्वायर्स लॉज एक्टिव एनजीओस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एथिकल सेंसिटिविटी तो गवर्नेंस होची इटा एनकम्पास करची गोटे ब्रॉडर व्यू जो थिरे कि लॉज भी आसुची पार्टिसिपेशन भी आसुची एथिक्स भी आसुची नॉट जस्ट फॉर्मल गवर्नमेंट द फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहला द फॉर्मल लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यस इटा भी से एनकम्पास करूची द प्रोसेस एंड मेकानिजम्स फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी yes the ethical values and norms that guide the action of the state and the non-state actors yes the answer kon habo all of the above question number 11 consider a public policy aimed at improving nutritional status of children from marginalized communities a bhitru kouta would be a key indicator to assess the policy's effectiveness in addressing the rights issues concerning various sections of the society question ti कहला कि धर गोटे public policy जोटा frame हेची छुआ मानकर nutritional status को improve करिवा पई among the marginalized community तो ए चारोटी ऑप्शन भितरु कोटा गोटे की इंडिकेटर हे परिबो टू एक्सेस द पॉलिसीज इफेक्टिवनेस राइट्स इश्यूज जो वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को कंसर्न करछि ताको एड्रेस करिवा पई फर्स्ट स्टेटमेंट देला टोटल बजेट एलोकेटेड टू द पॉलिसी सेकंड स्टेटमेंट कहला नंबर ऑफ अंगनवाड़ी सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी थर्ड स्टेटमेंट कहला मेजरेबल रिडक्शन इन द प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द टारगेटेड कम्युनिटीज D option number D kala the number of meetings held by the policy implementation committee answer kon habo answer habo C reduction in the stunting or wasting जो कहला कि measurable reduction in the prevalence of stunting and wasting among the children from the targeted communities एटा करेक्ट आंसर हबो स्टेटमेंट नंबर ए कहितला कि टोटल बजेट एलोकेटेड टू द पॉलिसी बजेट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर सेउडा होची इनपुट मीटिंग दे आर द प्रोसेस जो इफेक्टिवनेस the number of anganwadi centers established under the policy so the effectiveness must be judged by the outcomes better health indicators number of meetings held by the policy implementation committee answer abo C question number 12 which of the following rights issues is often disproportionately faced by multiple vulnerable sections of the society leading to compounding effect of disadvantage statement number A right to freedom of speech and expression statement B right to vote in elections right to equality before law right to access to justice question कहला कि आ भितर को राइट टा often disproportionately face करा जाय by multiple vulnerable section of society जोटा कि गोटे डिसएडवांटेज रो गोटे कंपाउंडिंग इफेक्ट को शो करछि बा इट इज लीडिंग टू अ कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ डिसएडवांटेज फर्स्ट द vulnerable section कोन who are the vulnerable groups SCs, STs, women, poor जो माने कि often barrier face करूछंती due to the lack of legal aid बा cost discrimination delays in courts for example गोटे दलित poor woman she may not afford to approach courts तो एटा गोटे compounding disadvantage हे गला तो equality before law article 14 जोटा कि exist करूची paper रे but real barrier it is there for assessing the justice right to assess justice the right to assess justice kon hegala
एटा गोटे क्रिटिकल राइट इश्यूड फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स जो मानको लीगल एड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अवेयरनेस इट रिक्वायर्स legal aid, fast track courts, and awareness. Question number 13. A government launches a new scheme specifically targeted at providing housing for homeless individuals belonging to scheduled caste and scheduled tribes. This initiative primarily addresses which category of rights? गवर्नमेंट गोटे नुआ स्कीम लॉन्च कला जोटा कि स्पेसिफिकली टार्गेट करूची जो माने होमलेस अछंती जो मानकर घर नाही से मानको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करिया पई जो माने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रो बिलोंग करूचंदी से मानको पई कि आ ए जो इनिशिएटिव ता को कैटेगरी ऑफ राइट्स को प्राइमरीली एड्रेस करूची फर्स्ट पॉलिटिकल राइट्स सेकंड सिविल राइट्स थर्ड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स बा फोर्थ कल्चरल राइट्स समस्त जानते कि हाउसिंग होची गोटे बेसिक नीड हाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक नीड जेमति कि फूड हे गला एजुकेशन हेल्थ हे गला तो एगुडा को राइट्स जाउची एगुडा जाउची सोशियो इकोनॉमिक राइट्स रे पॉलिटिकल राइट कोन जेमति वोटिंग हेला कंटेस्टिंग इन इलेक्शन सिविल राइट्स माने कोन सिविल राइट्स फॉर एग्जांपल इक्वालिटी हे गला बा पर्सनल लिबर्टी हे गला एंड व्हाट आर कल्चरल राइट्स जेमति कि लैंग्वेज निज लैंग्वेज को प्रिजर्व करबा हे गला प्रिजर्विंग लैंग्वेज बा निजर हेरिटेज एंड कल्चर को प्रिजर्व करबा हला सो द हाउसिंग फूड हेल्थ एजुकेशन एगुडी का जाउचे सोशियो इकोनॉमिक राइट रे आंसर अब सी सोशियो इकोनॉमिक राइट क्वेश्चन 14 द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट रे गोटे कांसेप्ट अछि होची प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन ता माने कोन what it implies first statement all public policies must continuously expand the scope of rights second statement कहला any policy change that weakens existing protection of rights should be carefully scrutinized and justified third statement कहला कि public policy should primarily focus on rectifying the historical injustices जहां भी injustice हेची हिस्टोरिकली ताकू ठीक करिया पई ताकू रेक्टिफाई करिया पई पब्लिक पॉलिसी रा प्राइमरी फोकस हवा दरकार ऑप्शन नंबर डी कहला कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स शुड ऑलवेज इवॉल्व इन अ प्रोग्रेसिव डायरेक्शन कोन बरा आंसर नॉन रेट्रोग्रेशन प्रिंसिपल कोन फर्स्ट आगा बुझो What is non-retrogression principle or principle of non-retrogression? Once गोटे certain level of right जेतेबेले achieve हेई गला once स्पेसिफिकली जेमती सोशियो इकोनॉमिक राइट हला जेमती हेल्थ एजुकेशन फूड टेक तापरे कि बैकवर्ड स्टेप से नहीं परिबनी फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम से जो गुडा कि फ्री मिड डे मील्स प्रोवाइड होची स्कूल्स माने करे गवर्नमेंट ताको सडनली से ताको रिड्यूस करि परिबनी कि एबे सप्ताह को थरे दिया जीवो से गोटे बैक स्टेप नहीं परिबनी एबे So the government should not suddenly reduce it to 1 meal a week. ठीक है unless ता पाखरे किसी strong justification सेमती अछि जेमती कि किसी emergency financial crisis आसी गला जेने financial emergency आसिला ता पाखरे जदी सेमती किसी strong justification नाही ताले से step backward नहीं परिबनी so option A is wrong all public policies must continuously expand the scope of right एक तो एटा गोटे extreme statement हे जाउची and this is wrong kind of policy it doesn't always have to expand the rights से माने they can focus on quality or stabilization option number B कोन हला any policy change that weakens existing protection of rights should be carefully scrutinized or justified yes this is correct
Public policy should primarily focus on rectifying the historical injustices. এটা ভুল হবে কারণ retrogression এটা historical injustice বিষয়ে সে কিছু কহুনি. It is not about some historical injustices. এটা হଉଛି কি যাহা ବି ଏବେ current protection ଦିଆ ଯାଇଛି, it is not about rolling back. The interpretation of rights should always evolve in a progressive direction. এটা ବି ভুল হবে. So the principle of non-retrogression कौन है कि no backsliding in rights protection without very strong justification. मैम ए क्वेश्चन रे ଟିକେ बुझी हलानी आउ थरे कहबी हो ठीक अछि म आउथरे कहूची ଟିକେ एग्जांपल कोन देखियो ठीक अछि. प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन बुझी गले ऑप्शन चारटा भितरु कहि परिबे कि ऑप्शन बी टा ही हबो. मु फर्स्ट कहि दोची प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन कोन काहे एई कांसेप्ट ऊपर ही क्वेश्चन अछि. आ माने हैला कि धर गोटे राइट्स किछ गोटे सर्टेन कम्युनिटी पई कि जे कोनोसी गोटे सोशियो इकोनॉमिक राइट जेमति मिड डे मील स्कीम रो हमें एग्जांपल नबा. मिड डे मील स्कीम लॉन्च हेछि कि फ्री रे दिया जीवो छुआ मानको गवर्नमेंट स्कूल रे. एबे गवर्नमेंट जदि चाहिबो मन इच्छा ताको रोल बैक करि परिबो नै. ठीक अछि. वंस अ सर्टेन लेवल ऑफ राइट अचीव हे गला, स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक राइट जेमति हेल्थ उपरे कि एजुकेशन कि फूड उपरे, स्टेट सडनली बैक स्टेप नहीं परिबनी. स्टेट शुड नॉट टेक स्टेप्स बैकवर्ड. जेमति कि मोइटे मिड डे मील रो फ्री मिड डे मील्स रो एग्जांपल देली जोटा कि स्कूल रे प्रोवाइड होची. गवर्नमेंट एबे मन इच्छा चाहिले ताको सडनली रिड्यूस करि परिबनी कि एबे हमें सप्ताह को थरे दबु कि 15 दिन को थरे दबु. जे सेति बेले करि परिबो काने सबु जिंसर गोटे एक्सेप्शन अछि. धर किछि गोटे स्टेट रे कि कंट्री किछि गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी आसी गला, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्राइसिस आसला, तो एबे गवर्नमेंट पाखरे गोटे स्ट्रांग जस्टिफिकेशन अछि. एबे हमें जस्टिफिकेशन ऊपर माने डिस्कस करूने. तो जे पर्यंत ता पाखरे सेमिति गोटे स्ट्रांग जस्टिफिकेशन नाही जो प्रोटेक्शन से वल्नरेबल कम्युनिटीज मानक पई ऑलरेडी से देई सारची, राइट्स ऑलरेडी अचीव हेई सारची, ताकू से सडन रोल बैक करि परिबो नै. एबे बुझियला जी ओके. Question number 15. Which of the following is a potential mechanism for ensuring greater accountability of public authorities in addressing the rights issues of marginalized communities? आ भितरु कोटा गोटे potential mechanism greater accountability ensure करिवा पई of public authorities जेतबळे marginalized communities को right ऊपरे कथा आसे in addressing the rights issues of the marginalized communities. A. Periodic election at all levels of government. B. Mandatory training programs for government officials on human rights. C. The establishment of independent oversight bodies with powers to investigate right violations and recommend remedial action. Increased budgetary allocation for welfare schemes targeting vulnerable groups. आंसर कौन हम? आंसर हम आर सी. एस्टाब्लिशमेंट ऑफ गोटे सेकेंड हाँ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज विथ द पावर टू इन्वेस्टिगेट राइट वायलेशंस एंड रिकमेंड रिमेडियल एक्शन. जो ओवरसाइट बॉडीज रहिले फॉर एग्जांपल एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन, एससी/एसटी कमिशंस, वुमेन कमिशंस, से माने कोन एन्श्योर करंती कि जो अथॉरिटीज माने रहिले दे डोंट मिसयूज देयर पावर. ए रे कोन दिला पीरियडिक इलेक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. पीरियडिक इलेक्शन एटा एन्श्योर करे कि जो जनरल अकाउंटेबिलिटी, इट एन्श्योर्स जनरल अकाउंटेबिलिटी, किंतु एटा ये गारंटी दोनी कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स रहिले तांकर राइट्स it will be protected. Mandatory training programs for government officials on human rights. Training officials एटा helpful हेई पारे किंतु एटा accountability गोटे provide करूनी. Officials may still misuse their power. So there is a chance
ऑप्शन नंबर सी डिस्कस कले देन डी कौन कहला increased budgetary allocation for welfare scheme targeting the vulnerable groups बजेट रे फंड बेसी allocate करा जिबा एटा गोटे भलो कथा इट इज गुड किंतु जदि तार ओवरसाइट ताको करबा को के नथिबे द फंड्स कैन बी मिसयूज्ड तो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एटा कोन एन्श्योर करे it ensures checks and balances plus people's confidence or trust ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 what is the primary objective of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana launched in February 15th 2024 to provide subsidized cooking gas to rural households এটা easy question अछि to promote rooftop solar panel installation with subsidies for free electricity to develop large scale solar power plants across India to provide free electricity meters to urban households कितना नंबर क्वेश्चन एटा क्वेश्चन नंबर 16 ओके एटा समस्त को आसुथिबो आई गेस आर आंसर कोन बो आंसर बो बी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एटा तो नारो ही स्कीम रो जना पड़ी होची टू प्रमोट रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन विथ सब्सिडीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी केबे लॉन्च हेतला 15th February 2024 रे लॉन्च हेतला द प्राइम मिनिस्टर आवर प्राइम मिनिस्टर गोल कोन टू प्रोवाइड अप टू 300 यूनिट्स of free electricity per month through rooftop solar panel. Okay. तो एथिरे सब्सिडीज दिया जाउची लोन दिया जाउची फॉर हाउसहोल्ड्स टू इंस्टॉल द पैनल्स फर्स्ट ऑप्शन कोन थिला टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस टू रूरल हाउसहोल्ड्स ना एटा होची एटा को योजना एटा होची उज्ज्वला योजना then second discuss collect to develop large scale solar power plants across India this is national solar mission to provide free electricity meters to urban households this is not the scheme's focus the PM Surya Ghar it is rooftop solar up to 300 units free electricity subsidy support bhi miluchi which of the following is not an eligibility criterion for households under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana PM Surya a particular scheme under re eligibility criteria कोन रही को माने स्कीम रो लाभ उठाई परिबे फर्स्ट the household must be an Indian citizen second कहिछि the household must have a valid electricity connection third option कहला the household must have availed a prior subsidy for solar panels then last option is the household must own a house with a roof suitable for solar panel installation आ भितरु eligibility criteria को ऑप्शन टा फुलफिल करूची ऑप्शन नंबर सी household must have availed a prior subsidy for solar panels eligibility कोन एठी दरकार होची कि गोटे सिटीजन हेइथिबो से must have valid electricity connection थिबो then household must own a house with a roof suitable for solar panel installation एटा तो ऑब्वियस अछि तो ऑप्शन सी एठी करेक्ट हबो काइना से पचारची आ भितरु कोटा नुह नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी तीनटा होची एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आमे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कले कोन एलिजिबिलिटी अछि इंडियन सिटीजन हेतिबो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन थिबो वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आस्थिबो देन ताका पाके निजर हाउस थिबो जहार रूफ सुइटेबल थिबो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पई एगुडा होची एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया what is the estimated annual savings for the government due to the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana factual question achi rupees 50,000 crore rupees 75,000 crore 75,021 crore then 4,950 crore
आंसर कोन हबो आंसर हबो बी 75,000 crore कहना ये जो स्कीम टा अछि it is estimated to save the government this much amount of money per year electricity cost एटा फैक्चुअल क्वेश्चन थिला एथरे बुझिबार किछि नाही जस्ट रिमेंबर द फैक्ट question number 19 read question number 19 wait a second हाँ. क्वेश्चन नंबर 19 कहिछि कि आ भितर को स्टेटमेंट ता करेक्ट रिगार्डिंग ओडिशा गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर बजेट फॉर 2024 टू 2025 फर्स्ट ऑप्शन कहला कि हेल्थ सेक्टर बजेट फॉर 2024-2025 इज रुपीस 16,048 crore आउ इंक्रीज देखा जाइछि 32% रो ओवर प्रीवियस फिस्कल ईयर ऑप्शन नंबर बी गोपबंधु जन आरोग्य योजना जो कि alocate करा जाइछि 3,056 crores rupees for providing cashless healthcare. C. The health sector budget constitutes approximately 8% of the total state budget for 2024 to 2025. Option number D. Amo hospital scheme has been allocated rupees this much amount, which is 2,095 crore in the 2024 to 25 budget. Answer कौन हबो आंसर इज सी ऑप्शन नंबर ए कौन पाई इनकरेक्ट कहेंगे ना ए जो पर्टिकुलर अमाउंट ता देछि हेल्थ सेक्टर बजेट इनकरेक्ट बिकॉज दिस मच अमाउंट जो 16,048 crore was the budget estimate for the previous fiscal year not 24-25 ओके आ जो करंट बजेट रहिला सेटा होची 21,200 crores जोटा कि 32% रो इंक्रीज शो करूची ओवर द प्रीवियस ईयर सो दिस इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट बी गोपबंधु जन आरोग्य योजना has been allocated एतिकी अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग कैशलेस हेल्थ केयर actually amount ta etiki no because amount allocate heji somewhere around to be 5450 crores to be precise ठीक अछि एति भी factual भूल अछि fact भूल अछि तो एटा भी incorrect हे गला the health sector budget constitutes about 8% of the total state budget for 24-25 this is correct kana health sector ta 8% constitute करूची of the total state budget. Amo hospital scheme has been allocated this much amount in the 24-25 budget. No, this is incorrect. Kaina actually allocate hechi rupees 1,314 crores. So, ita be incorrect hala. Option number C is the correct answer. What is the significance of renaming the Biju Swasthya Kalyan Yojana to Gopabandhu Jana Arogya Yojana in Odisha? रीनेम जो हैला बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना को चेंज करा जाए कि जो गोपबंधु जन आरोग्य योजना रखा गला ओडिसा रे तार सिग्निफिकेंस कोन रीड द ऑप्शंस फर्स्ट स्टेटमेंट कहला कि एटा इंडिकेट करूची गोटे कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम विथ नो कनेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एटा भूल हे जिवो it aligns with the implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in Odisha this is correct कहना जो बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रहला सेटा रीनेम हैला गोपबंधु जन आरोग्य योजना को तार एम सेतबळे एटा थिला जेतबळे रीनेम हैला द एम वाज कि
कन्वर्जेंस हो विद द सेंट्रल आयुष्मान भारत स्कीम। तो जदि एठी नोटिस करिवो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। ठीक अछि। तो फर्स्ट कोछि कि तार कोनोसी कनेक्शन नाही सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम संगे, किंतु ऑप्शन बी कोछि कि से अलाइन करूची इंप्लीमेंटेशन विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत, जोटा कि ओटा सेंट्रल स्कीम। तो एटी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, काना तार एम एटा थिला। तो ए इज रॉन्ग, जोटा कि कैन इट इज नॉट ए कंप्लीट ओवरऑल, आउ सेटा कॉन्ट्राडिक्ट करूची आउ गोटे स्टेटमेंट को। देन सी भी रॉन्ग, काना सी कहला कि इट रिड्यूसेस द फंडिंग एलोकेटेड टू कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ स्टेट। तो रिड्यूस करा जायनी फंडिंग, फंडिंग इज नॉट रिड्यूस्ड, तो एटा भी भूल हे गला। इट प्रायोरिटाइजेस द नेशनल हेल्थ मिशन ओवर स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, नो दिस इज रॉन्ग, काना स्टेट it still runs its scheme along with the NHM, the state specific healthcare initiative गुडी को ऊपर प्रायोरिटाइज करा जाउनी। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following statement सुभद्रा योजना ऊपर क्वेश्चन अछि जोटा कि ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च हेतला, आ भितर कोटा करेक्ट। Scheme provides financial assistance of 50,000 rupees over 5 years to eligible women. Women aged 21 to 60 years as of 1st 7 2024 are eligible for the scheme for the financial year 2024 to 25. Women receiving a pension of 1,500 per month or more from any government scheme are eligible. The scheme promotes digital financial literacy through reward program for digital transactions. कौन बार करेक्ट आंसर? ऑप्शन गुडी को एटी मु शो कर दोची जे समस्त स्टेटमेंट पढी सारचंदी तो। Okay, now the statements or options both are visible. 1 2 4 1 4 2 3 1 2 3 4. सुभद्रा योजना समस्त पढ़िथिबे, न्यूज रे अछि एंड देयर इज हाई चांस कि प्रीलिम्स रे आसी पारे। फर्स्ट तो एटा ठीक अछि, स्टेटमेंट फर्स्ट कि स्कीम 50,000 प्रोवाइड करूची ओवर 5 इयर्स, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करूची। Then option number 2, this is also correct, 21 to 60 eta bhi correct achi। A fact years as of 1/7/2024 are eligible for the scheme of the financial year 24-25, this fact is also correct। Women receiving pension of greater than or equal to 1,500 कहला कि सेमाने eligible per month जो गवर्नमेंट थारु पेंशन पाउचंती, no, they are ineligible। कहीं ना एटा वेलफेयर बेनिफिट संगे ओवरलैप होची, ओवरलैप विथ वेलफेयर बेनिफिट्स अवॉइडेड। Scheme promotes digital financial literacy through reward program for digital transactions, this is correct। मैडम एटा 1500 रो मोर हबनी? नाइ नाइ मोर हबनी ना, एटा मोर हबनी। हां एठी कहि छै मोर कहि छै, तो सेति पय तो एटा भूल हैला। हां सेटा हबनी आगे। हां 1 2 and 4। Question number 22, which of the following categories of women are ineligible to receive benefits under the Subhadra Yojana? Again Subhadra Yojana ऊपर question अछि। Women whose family owns more than 5 acres of irrigated land, but जो women जो माने कि they are employed as Anganwadi workers or Asha workers, women who are elected as ward members in Panchayati Raj institutions, women whose family members are income tax pays। आ भितरु को कंडीशन ता फुलफिल होउतिले से माने इनएलिजिबल हे जिबे, नॉट एलिजिबल, इनएलिजिबल हे जिबे टू रिसीव द बेनिफिट्स अंडर द सुभद्रा योजना। स्टेटमेंट ता आउथरे पढि नियंतु समस्ते।
स्टेटमेंट 1 कहला कि women whose family owns more than 5 acres of irrigated land से माने ineligible हेबे. This is correct. काना जो women मानको family पाखरे 5 एकड़ अधिका irrigated land थिबो, more than 5 acres of land or 10 acres of or 5 acres of irrigated or 10 acres of non irrigated land से माने ineligible हे जिबे as per the schemes criteria. तो एटा ठीक अछि काना एटा ineligibility criteria हे जाउची. Women employed as अंगनवाड़ी workers or आशा workers से माने ineligible हे जिबे. This is wrong. कहीं ना जो माने अंगनवाड़ी वर्कर बा आशा वर्कर भाबरे एम्प्लॉयड बा अदर वर्कर जो माने ऑनरारियम से माने रिसीव करूचंदी, they are eligible for the scheme if they meet the eligibility criteria. Women who are elected, तो टू हमर कटि गला तो हम पाखरे अछि A and C भितर गोटे आंसर हबो 4 कॉमन अछि तो 4 is correct. किंतु हमें 4 भी देखिबा why it is correct. Women who are elected as ward members in panchayati raj institutions से माने ineligible हेबे नहीं से माने this is incorrect काना जो माने वार्ड मेंबर भाबरे से माने इलेक्ट हे चंदी और काउंसिलर्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बा जे कोनोसी अर्बन लोकल बॉडी से माने को एक्सक्लूड करा जाउ नहीं फ्रॉम एलिजिबिलिटी. हाउएवर जदि से माने कोनोसी हायर पोजीशन पाई का इलेक्ट हे चंदी जेमति कि अदर देन वार्ड मेंबर बा काउंसिलर से माने इनएलिजिबल हे जिबे. किंतु जेहेतु एटी हायर पोजीशन रो सिचुएशन कंसीडर करा जाउ नाही तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Women whose family members are income tax paid एटा ठीक अछि, दे आर इनएलिजिबल कना women माने जो मानकर फैमिली मेंबर्स मन जो माने इनकम टैक्स दो चंदी, दे आर इनएलिजिबल अंडर द स्कीम. So 1 and 4 करेक्ट हबो. Question number 23. Which of the following is the primary objective of the Madhav Singh Hatak Kharcha Yojana introduced by Odisha government? Statement A, to provide free textbook to all students in Odisha. Statement B, to reduce dropout rate among tribal students by providing financial assistance. The statement C, to establish new schools in tribal areas. Statement D, to train teachers for tribal education. Answer कौन हबो? Answer हबो B. Particular objective or primary objective कौन of this योजना Madhav Singh हाथ खर्च योजना to reduce the dropout rates among the tribal students by providing financial assistance. हाथ खर्च ए टू देखि कि एक ए दीटा वर्ड को देखि कि जानि परथिबे कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस और मनी. ठीक अछि. तो जो ट्राइबल स्टूडेंट्स माने अछंती सेटा देखा जाय कि दे ऑफन ड्रॉप आउट आफ्टर क्लास 8th ड्यू टू पॉवर्टी. तो इस स्कीम रे से कोन प्रोवाइड करूची गोटे डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट से प्रोवाइड करूची टू कंटिन्यू इन क्लास 9th एंड 11th. सो जो ऑप्शंस रही छी जेमति फ्री टेक्स्ट बुक दिया जिवो कि नुवा स्कूल हबो टीचर ट्रेनिंग हबो, दे आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स. ए पर्टिकुलर इनिशिएटिव अंडर रे एटा कि ट्राइबल स्टूडेंट मान को सपोर्ट करा जाउची टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट्स. Question number 24. With reference to the Madhav Singh Hath Kharcha Yojana, which of the following gote second ethi which of the following statements are correct? First statement dela scheme provides financial assistance to tribal students who have passed class 8th or 10th and are enrolled in class 9th or 11th. Odisha government allocate karichi 500 crore for this scheme in the current budget. Third statement कहला कि ए जो scheme ता design हेची it is to promote the social inclusion by supporting the marginalized communities. तीनटा statement भितरु को ऑप्शन टा को स्टेटमेंट टा करेक्ट हबो तळे चारटा ऑप्शन देछि. फर्स्ट हमें डिस्कस कले कि एटा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करूची
to tribal students who have passed 8th and 10th class to enroll in 9th and 11th class. এটা আমি উপরে ডিসকাস কলে Odisha government allocated 500 crore for this scheme in the current budget. This is wrong. Then monetary allocation is less. मैडम 156 crore. Sorry? 156 crore. Budget. सुबुनी कौन 156. कहउछंदी? Budget Okay, टा एटा 150. कहउछंदी कि 156. हां हां. Okay. This is correct. तो ए ऑप्शन टा भूल हे जाउची काना एठी कहै छी कि ओडिशा गवर्नमेंट इट हैज allocated 500 crores for the scheme in the current budget, which is incorrect. Scheme टा डिजाइन हे छी to promote social inclusion by supporting the marginalized communities. It is obvious. Tribal students मान को support करिया पई scheme टा डिजाइन हे छी. ठीक है जी. Education to ensure education plus inclusion. 1 and 3. Question number 25. Which of the following measures is not a recommended way forward for the Madho Singh Hath Kharcha Yojana to maximize its impact? आ भितरो को मेजर टा recommend करा जाउ नै for this particular yojana to maximize its impact. First कहला ensuring timely disbursement of funds to eligible student. Second statement कहला monitoring and evaluating the scheme's impact on dropout rates. Third statement कहला reducing the financial assistance amount to cover more students. And D कहला कि improving educational infrastructure in tribal areas. Correct कौन हबो? एटा मैडम एटा It's not correct पचारजी. एटा Ensuring timely disbursement of fund to eligible student. Timely disbursement न हेले चालिबो केमिति योजना बा तर timely implementation केमिति हबो. So this is actually needed. It is recommended. एटी पचारजी not recommended. नॉट हां सीटा हाँ तो एटा incorrect हबो. Question the demand हिसाब रे एटा incorrect हबो. But for this योजना or scheme this is recommended किंतु question पचारले कि कोटा दरकार नहीं कोटा not recommended. So this is incorrect haba. As per the demand of the question. Monitoring and evaluating the scheme's impact on dropout rates. Monitoring is very important. कि scheme टा बा योजना टा efficiently चलची कि नहीं, beneficiaries मान को पाखरे पहुंची कि नहीं. Question demand हिसाब रे incorrect हबो. काना not पचारची. Reducing the financial assistance amount to cover more students. Ma'am, answer is C. हाँ, answer is C. D कौन पाई हबनी improving educational infrastructure in tribal areas. एटा भी incorrect हबो. हमको आंसर मिली जाई आंसर is C. Which of the following statement is correct regarding CM Kisan Yojana launched by the Odisha government? First कहला कि financial assistance provide करूची केते 4,000 annually to all farmers in Odisha in a single installment. Option number B कहला it is designed to complement the PM Kisan scheme and includes a scholarship scheme for farmers' children. Statement Answer C, is B, ma'am. it aims to cover approximately 46 lakh farmers but excludes small and marginal farmers. Option number D, it replaces PM Kisan scheme in Odisha to address the regional disparities. Options अछि कि ना चारटा स्टेटमेंट भितरु चूज करे पड़िबो. समस्त आउथरे स्टेटमेंट ता पढि दियंतु. 26th नंबर रो जो ओडिशा सीएम लॉन्च करछन्ती सीएम किसान योजना इन 2024 तो एटा कॉम्प्लीमेंट करूची पीएम किसान स्कीम को जोटा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करूची 6,000 रुपीस बाय एडिंग 4,000 एक्स्ट्रा टोटल केते दिया होची 10k per farmer. So it is complementing that.
एटा रॉन्ग हबो काहे ना सिंगल इंस्टॉलमेंट रे दिया जाउ नै ठीक अछि नॉट इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट इट इज phased manner रे दिया जाउ छी आंसर हबो बी it is designed to complement PM Kisan scheme and includes a scholarship scheme for the farmers children एटा ठीक अछि आंसर इज बी जे आंसर बी कहउतले करेक्ट आंसर बी हबो it aims to cover approximately 46 lakhs farmers but excludes the small and the marginal farmers nahi eta bhul achi kaina it covers small and marginal farmers too so this is incorrect it replaces PM Kisan scheme nahi ethi कहला complement करछि पुनी एठी कहउछि से replace करछि एठी दिटा contradictory statement देला तो ऑप्शन डी भी incorrect हबो एटा PM Kisan scheme को replace करूनी एटा ताको complement करूछि What is one of the key objectives of the CM Kisan Yojana in the context of rural development in Odisha? आ भितरु कोटा तारा objective to provide free agricultural equipment to all farmers. एटा बहुत easy question ऊपर ही discuss करले हमें. To reduce poverty and improve the quality of life in rural areas. To replace traditional farming practices with organic farming. To urbanize rural areas through infrastructure development. Answer कौन हबो? Answer is B. To reduce the poverty and improve the quality of life in rural areas. केमती जो केते नंबर क्वेश्चन एटा हां 27 जो सीएम किसान योजना जोटा रहिला जोटा ओडिशा गवर्नमेंट सीएम लॉन्च करजन 2024 रे गोटे स्टेट लेवल स्कीम एम्ड एट सपोर्टिंग द फार्मर्स समस्त जानले एथरे कोन दिया जाउची फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाउची जोगुडा की ए स्कीम अंडर रे प्रोवाइड करा जाउची टू रिड्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट कोन पई दिया जाउची कि जो फार्मर्स मान को ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन टा रहउची ताकू रिड्यूस करबा पई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाउची जोड़ा कि तांकर कोन इंक्रीज करूची डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करूची तो तांकर सेतरे कोन होची क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होची जेते बळे फार्मर मानकर इनकम राइज होची पोवर्टी रिड्यूस होची तांको बेटर फूड हेल्थ एजुकेशन मिलुची एजुकेशन आउटकम्स मिलुची रूरल हाउसहोल्ड रे तांकर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होची इन रूरल एरियाज सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट Which of the following measures is suggested as a way forward for the effective implementation of the CM Kisan Yojana? गोटे वे फॉरवर्ड हिसाब रे ए जो चारटा स्टेटमेंट भितरु कोटा सजेस्ट करा जाई परिबो फॉर सीएम किसान योजना गोटे स्कीम पई वे फॉरवर्ड यूजुअली मीन्स कि तारा expand its reach scheme रो reach expand हो coverage expand हो ଆଉ better monitoring हो एटा केवल एई स्कीम पई लागू नय एटा सब स्कीम रो गोटे ओवरऑल वे फॉरवर्ड एई तीनटा ऊपर फ्रेम हेई परिबो द आंसर हबो expand the scheme to include more beneficiaries and increase the financial assistance ठीक अछि तो एथिरे कोन हबो फाइनेंस इफेक्टिवनेस ता इंक्रीज हबो Question 29 which of the following is primary objective of the CM Kamadhenu Yojana approved by the Odisha cabinet First कहला to promote industrial development in urban areas to increase milk production and support dairy farmers, to enhance the production of cash crops, to develop irrigation infrastructure. 29th number question. एटा तो नारो ही स्कीम रो जाना पड़ी होची योजना स्कीम जहां भी इत्र तो नारो ही जाना पड़ी होची वेरी इजी क्वेश्चन to increase the milk production कामधेनु रो एटी समस्त जानि परथि to increase the milk production industry तो नुह cash crops तो नुह irrigation तो नुह milk production and support the dairy farmers option number B what is the another factual question budgetary allocation कोन CM कामधेनु योजना
जोटा कि ओवर 5 इयर्स पे डिसाइड करा जायछि व्हाट इज द बजेटरी एलोकेशन ऑफ द सीएम कामधेनु योजना ओवर 5 इयर्स एथरे किछि बुझियार नै एटा स्ट्रेट फैक्ट आंसर हबो बी 14,023.47 crore एति की बजेट एलोकेट करा जायछि ए पर्टिकुलर योजना पे 31 which of the following component not part of the CM कामधेनु योजना आ भितरो कोटा CM कामधेनु योजना रो गोटे पार्ट नुआ बुफालो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बा काफ रियरिंग बा इरिगेशन फैसिलिटी एनहांसमेंट ऊपर हमें डिस्कस करले दिस इज नॉट अ पार्ट डेयरी फार्मिंग इंश्योरेंस तो इरिगेशन फैसिलिटी एनहांसमेंट ता आरो गोटे कंपोनेंट नुआ कंपोनेंट रे कोन जाउची बुफालो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जाउची काफ रियरिंग प्रोग्राम जाउची आउ डेयरी फार्मर बा लाइव स्टॉक इंश्योरेंस एतरे इंक्लूड होउची ठीक अछि तो ए जो कामधेनु योजना टा रहिला सेटा प्राइमरीली एटा गोटे डेयरी फोकस्ड योजना नॉट इरिगेशन आंसर अब नॉट पचारची सी हाउ डज सीएम कामधेनु योजना कंट्रीब्यूट टू रूरल लाइवलीहुड्स इन ओडिशा रूरल लाइवलीहुड को से केमिति कंट्रीब्यूट करूची अर्बन माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट पई की जो अर्बन एरियाज को माइग्रेट हे होचन रूरल एरियाज थ्रू ताकू प्रमोट करी की से कंट्रीब्यूट करूची बा प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू डेयरी फार्मिंग थ्रू से कंट्रीब्यूट करूची बा स्टेटमेंट सी कहिची बाय फोकसिंग ऑन मेकानाइज्ड फार्मिंग टेक्निक्स और बाय एनकरेजिंग नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस आंसर कोन हबो आंसर हबो बी कहना जो डेयरी फार्मिंग रहिला सेटा गोटे रेगुलर इनकम सोर्स प्रोवाइड होची ठीक अछि अनलाइक जहां भी सीजनल क्रॉप्स रहिला बाय प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल livelihood through dairy farming it is providing regular income source unlike the seasonal crops तो एटा स्ट्रेंथन कोन करची एटा एन्श्योर करची कि स्टेडी कैश फ्लो आसीबो फार्मर्स मानक पाखकू तो एटा अर्बन माइग्रेशन रो तो ऑपोजिट situation एठी हमें डिस्कस करचे so this is not related to urban migration it is not promoting this then C कहिची by focusing on mechanized farming techniques ना by encouraging non agricultural enterprises no this is irrelevant एटा गोटे dairy focused योजना which of the following is recommended way forward of the effective implementation of the CM कामधेनु योजना सबु स्कीम रो बेसिक जनरलाइज्ड वे फॉरवर्ड कोन कोन हेई परिबो मु ऊपर डिस्कस कली फर्स्ट स्टेटमेंट कहिला कि डिसकंटिन्यू फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल स्केल फार्मर्स कि फाइनेंशियल सपोर्ट ही से माने फंड ही देबेनी डिसकंटिन्यू कर देबे जो स्मॉल स्केल फार्मर्स अछंती इंटीग्रेट द स्कीम विथ अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टी लिमिट द स्कीम टू अर्बन डेयरी फार्मर्स एटा सब बेले मन रखि जते बेले कि पचारथिबो क्वेश्चन रे कि वे फॉरवर्ड तो वे फॉरवर्ड ता सब बेले पॉजिटिव हबो तो ऑप्शन रे अगर देखिबे जदी आईडिया नाही आ जदी एलिमिनेट करिवार अछि तो ऑप्शन रे देखिबे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कोन एटा कहिला कि डिसकंटिन्यू करि देबो फाइनेंशियल सपोर्ट जदी स्कीम विषय रे कि आईडिया भी नाही तो एटा गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट हे जाउची आ वे फॉरवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव एटी कहिला कि लिमिट कर देबो स्कीम टू ओनली अर्बन डेयरी फार्मर्स एटा भी नेगेटिव स्टेटमेंट हे जाउची रिड्यूस द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिस इज आल्सो अ नेगेटिव स्टेटमेंट आंसर कोन हबो आंसर हबो बी इंटीग्रेट द स्कीम विथ अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट जते बेले इंटीग्रेशन हबो फॉर एग्जांपल बाकी गवर्नमेंट प्रोग्राम संगे तो सेथरे कोन हबो कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट ताको मिलिबो ठीक अछि How many villages are targeted under the Gramodaya scheme in Odisha? Factual question. केतरा scheme केतरा village target हो चंदी? Which is 583 villages. ठीक अछि
583 villages are targeted. Gramodoya scheme Odisha se target korchandi 583 villages ku. Mostly left wing extremism affected. Mostly jo mane LWE affected villages रहिचंदी कोथि पई की to promote holistic development. (35) Which of the following is a key feature of the Gramodoya scheme? Deployment of additional military forces in LWE affected areas. Real-time monitoring through an LWE dashboard. C. Privatization of infrastructure projects in rural Odisha. Statement number D. Exclusion of community participation in scheme implementation. Answer ti kon abo? Answer abo B. Real time monitoring through LWE dashboard. Eta gote key feature. ये जो scheme टा रहिला ग्रामोदय scheme, it includes digital monitoring of what? Of development projects. जो villages मानकर चलची जो LWE affected villages मानकर चलची जो development projects carry out होची the scheme तारा digital monitoring provide करूची to ensure transparency. Statement A कौन कहूतला कि deployment of additional military forces in LWE affected areas. कहेंगे ना it is about development, not कि additional military forces आहुरी से माने से deploy कर देवे. The scheme talks about development. Privatization of infrastructure projects in the rural Odisha. No, एथरे किसी privatization रो कथा किसी उठा जाउनी. Exclusion of community participation in scheme implementation. एटा भी भूल कहना community participation एथरे include करा जाइए, exclude करा जाइए. सबले मन रखिबे कि जेतेबेले भी जहां भी स्कीम इंप्लीमेंट होजी योजना स्कीम प्रोजेक्ट जहां भी सबु थिरे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंपोर्टेंस दिया जाए. समृद्ध कृषक योजना of the Odisha government, consider the following statements. समृद्ध कृषक योजना स्कीम उपरे इस्टा स्टेटमेंट देइछि. कहिछि scheme enhances the paddy procurement price to rupees 3100 per quintal with payment disbursed via DBT within 48 hours. It includes input assistance for paddy seed growers registered with the Odisha State Seed Corporation OSSC Limited, but excludes those registered with the OSSO PCA. The initiative aims to simplify the procurement process by bypassing traditional procedural requirements. Statement number 4 कौन कहला जो स्कीम रा बेनिफिट अछि से गुडी एक्सक्लूसिवली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को पई एक्सक्लूडिंग लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स. लेंदी स्टेटमेंट्स अछि स्टेटमेंट्स गुडा आउथरे पढि दियो तळे ऑप्शन अछि स्टेटमेंट ता वंस रीड कर दियो देन आई विल शो द ऑप्शंस. फर्स्ट स्टेटमेंट कहले कि जो समृद्ध कृषक योजना प्राडी प्रोक्यूरमेंट प्राइस को से एनहांस करिछि एबे केते 3100 रुपीस पर क्विंटल. आ पेमेंट ता केमिति डिसबर्स होबो केमि दिया जिवो बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विदिन 2 डेज विदिन 48 आवर्स दिया जिवो. आ एटा पूरा ठीक अछि. दिस इज स्ट्रेट अप फैक्ट. आ एटा जहां भी नंबर्स एंड फैक्ट्स एथरे देइछि सेडा सब ठीक अछि. It includes input assistance for paddy seed growers registered with the Odisha State Seeds Corporation, but excludes those registered with OSSO PCA. एटा इनकरेक्ट अछि काना जो स्कीम ता अछि एटा इंक्लूड करछि जो पैडी सीड ग्रोवर्स जो माने रहिले जो माने आ अंडर रे भी जो माने रजिस्टर्ड अछंदी तांको भी से इंक्लूड करूछि. तो एथि स्टेटमेंट रे कोन देला
it excludes them. तो एटा भूल ही जीवा. The initiative aims to simplify the procurement process by bypassing traditional procedural requirements. This is correct. kana scheme ro aim hi eta ki se streamline karibo procurement process को. कहा को एलिमिनेट करके जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर रहिला ताको एलिमिनेट करके से स्ट्रीमलाइन करिवो प्रोसेस को. तो दिस इज करेक्ट. स्कीम रो बेनिफिट एक्सक्लूसिवली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो तरह की लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाउची. एटा इनकरेक्ट काइना समथि किछि स्पेसिफाई हेनी इस स्कीम रो बेनिफिट रे दैट it is exclusive to खाली small और marginal farmer और large land holding farmers को exclude कर दिया जिवो जोटा कि ए statement को गोटे mere assumption this is not stated anywhere in this scheme. Answer कौन हबो? Answer is पचारची incorrect पचारची आमे को स्टेटमेंट इनकरेक्ट कले गोटे 1 इन 2 इनकरेक्ट थिला आ गोटे 4 इनकरेक्ट अछि बो ए 2 1 4. 37 which of the following not an implication of the Debala Yojana scheme launched by the government? First, boosting religious tourism. Second, preservation of cultural heritage. Third, socio-economic development of local communities. Fourth, expansion of digital infrastructure in rural areas. कौन हमारा आंसर? आंसर इज पचार क्वेश्चन कहिछि नॉट एन इम्प्लिकेशन. ठीक अछि. तो ये जो योजनाटा रहिला एटा होछि ओडिशा स्कीम फॉर रेनोवेशन and conservation of religious sites. तो तार implication कौन हबो? रिजल्ट कौन हबो तार कि जो religious tourism boost हबो, heritage conservation हबो, local economic growth हबो आउ digital infrastructure expansion एटा unrelated अछि एथरे. आर आंसर कौन हबो? not an implication पचारछि तो आंसर हबो एटा. Expansion of digital infrastructure in rural areas. This is not related to this scheme. What is the significant challenge faced in the implementation of Mo Jungle Jami Yojana in Jajpur district? A particular scheme ro implementation bele kon challenges face kariba ko paduchi? First, the lack of tribal population in the district. Second, kaichi delay in land surveys and identification process for housing and land rights. Statement C कहला कि excessive funding leading to mismanagement of resources. Statement number D कहला कि over completion of housing projects ahead of the schedule. ए स्कीम रो एम कोन? स्कीम टी कोन कहूची कि recognition of forest rights plus housing plus livelihood support. Our biggest challenge आसुची कि जो आइडेंटिफाई करिबारे जो डिले होउची बा सर्वे करिबारे जो डिले होउची सेटा होउची तार बिगेस्ट चैलेंज. आर आंसर कोन हबो? पचारची चैलेंज कोन आरो? द डिले इन लैंड सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉर हाउसिंग एंड लैंड राइट्स. Which of the following statement best describes the primary objective of the Mo Jungle Jami Yojana in Odisha? आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बा एम कोन? एबे हमें ऊपर तार ऑब्जेक्टिव डिस्कस कले. ये पर्टिकुलर स्कीम टी टारगेट का करे? ट्राइबल एंड forest dwelling communities and it provides land rights provide करे तांको plus housing benefits provide करे जोटा कि कोन करछि सोशल जस्टिस को एनफोर्स करछि आउ इंक्लूजन को प्रमोट करछि.
ए पर्टिकुलर स्कीम टी एजुकेशन विषय रे नुह टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट नो to expedite the recognition of forest rights and improve the housing livelihoods for tribal communities, yes, this is correct. Promote industrial development, nahi. To relocate tribal population, relocation ro katha edi kichi kuha jauna. Option number B is correct. Under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, what role do DISCOMs play as state implementation agencies? PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana under it, DISCOM mane as a state implementation agency कौन role से play करुछंती? First statement, the manufacture solar panels for households. Statement number B कहला कि से माने facilitate करुछंती net meter availability, timely inspection और commissioning of installations. Statement C कहला कि से माने loan provide करुछंती for solar panel installation. Statement D कहला कि से माने free electricity directly distribute करुछंती to households. आंसर कौन अब आंसर अब बी है ना डिस्कम से माने दे एक्ट एज स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी आ ताकर जॉब एथरे कौन रहउची कि से माने अप्रूव करिवे प्लस इंस्पेक्ट करिवे एंड एंश्योर करिवे कि जो नेट मीटरिंग रहउची आउ रूफटॉप सोलर कमीशन को ठीक अछि नॉट मैन्युफैक्चरिंग not loans and no direct electricity. Option number B. Consider the following statement with reference to Pradhan Mantri Awas Yojana. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin under जो beneficiaries अछंदी they are provided financial assistance of this much rupees 1.20 lakh in plain and hilly areas. Statement number 2 कौन कहला प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन रे 3 lakhs is provided under affordable housing in partnership vertical. आंसर कौन हबो पचरची इनकरेक्ट फर्स्ट एटा जानी रखो कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अछि तर दीटा कंपोनेंट अछि गोटे अछि अर्बन कंपोनेंट फॉर अर्बन पुअर आ गोटे ग्रामीण कंपोनेंट अछि एंड फॉर रूरल पुअर ठीक अछि जो अर्बन कंपोनेंट रहिला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रो सेटा इंप्लीमेंट करूची पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को अंडर हाउसिंग फॉर ऑल sorry housing for all केबेटा चली आसी since 2015 आउ एटा चारटा वर्टिकल्स रे इंप्लीमेंट हुए जेमति कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन हैला बा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप हैला इट देइछि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड in situ slum redevelopment और credit linked subsidy scheme. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहिला it is providing a fixed share of central assistance of rupees this much is provided under affordable housing partnership vertical. ये जो त देइछि एटा ठीक अछि फैक्ट आ ग्रामीण रे कोन हैला ग्रामीण इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल रूरल एरियाज पई मोबे जो कहली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ताको इंप्लीमेंट करूची आ सेटा केबेठारू ऑपरेशनलाइज अछि 2016 रु अछि टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एलिजिबल हाउसहोल्ड्स तो एडा दिस इज करेक्ट द अमाउंट्स आर करेक्ट एटा पचाला इनकरेक्ट कोन जेहेतु हमर दीटा जाको स्टेटमेंट करेक्ट अछि नीदर 1 और 2 मैम इथरे जो हिली और प्लेन एरिया रे अमाउंट डिफरेंट अछि शायद हां हिली एंड प्लेन एरिया रे डिफरेंट अछि तो एथरे टिके करेक्शन कर देबे हिली एरियाज रो अछि 1.20 आपण मानको एक्सप्लेनेशन मिली छी एक्सप्लेनेशन मिली छी पीडीएफ this much amount in plain areas
and hilly states रे अछि 1.30 lakh. तो 1 टा ताले रॉन्ग हे जो एटा टिके डाइसी अछि मु सरंग संगे नले कथा हे जिबी. हां सर मैम एटा रॉन्ग अछि के हम देखिथिले आगुर थरो स्टेटमेंट 1 टा रॉन्ग अछि. इनकरेक्ट. हां स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट अछि. ताहले एटा टिके कंफ्यूजन अछि एठी मु बेटा देखुली 2 and 1 और 2 रे. एटा एक्चुअली एटा फ्रेम ही सेमती हेछि कि 1.20 लाख इन प्लेन कहिछि देन एंड हिली स्टेट्स कहिछि मे बी देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक. ठीक अछि एठी नोट कर देबे कि 1.30 अछि हिली स्टेट्स पई कि जदी एक्सप्लेनेशन मिली नियारो त मु एठी कहूछि. ओके ओके with reference to grade scheme of the Ministry of Textiles, consider the following statement. It aims to promote innovation and entrepreneurship in the technical textile sector. Grant in aid provide kuruchi 20 lakhs for a period of 24 months. It is exclusively open to individual entrepreneurs and excludes startups and companies. Option को देखे दोची ग्रेड स्कीम विषय चारटा स्टेटमेंट देछि पचाची करेक्ट कोटा 1 1 and 2 2 3 1 2 3 this second ग्रेड रो फुल फॉर्म कोन ग्रेड रो फुल फॉर्म होची the grant for research and entrepreneurship across aspiring innovators in technical textiles. ठीक अछि आंसर कोन हबो फर्स्ट स्टेटमेंट कहला कि aims to promote innovation and entrepreneurship in technical textiles ना रुही जणा पड़छि एटा करेक्ट अछि. It provides grant in aid up to 20 lakhs for a period of 24 months. जोटा कि statement 2 टा it is not correct. Scheme does not offer grant in aid up to this much rupees. Statement 3 टा कोन हबो it is exclusively open to individual entrepreneurs and excludes the startups and companies. Statement 3 टा भी it is not correct. कहना एटा ओपन टू इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स मानक पई भी स्कीम टा ओपन अछि स्टार्टअप्स पई भी अछि आ कंपनी मानक पई भी अछि. आंसर हबो ए. Viability gap funding scheme is related to which of the following? एटा बहुत इजी अछि डैम कंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स. कोथि पई कि viability gap funding ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पई कि viability gap funding कोन एटा गोटे फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट तरफ रु टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो गुडा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गुडा इकोनॉमिकली जस्टिफाइड जो गुडा दरकार नॉट बट नॉट फाइनेंशियली वायबल इमीडिएटली जो मानक पारे इमीडिएटली फाइनेंस नाही बट दे आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड जोडा कि दरकार रिसेंटली ए स्कीम टा अप्लाई हेछि टू ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू अट्रैक्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन.
अर्लियर एटा कोन होतला एटा पीपीपी प्रोजेक्ट से नॉर्मली यूज होतला रोड एयरपोर्ट एटसेट्रा किंतु एबे स्पेसिफिकली एटा ऑफशोर विंड को कैटर करूची तो डैम कंस्ट्रक्शन नो एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड नो प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स नो रोड एक्सीडेंट इट इज लिंक्ड टू सेफ्टी स्कीम नॉट वीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग तो वायबिलिटी गैप फंडिंग एथिरा में कोन बुझिले एटा उडा गवर्नमेंट रो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट फाइनेंशियली अनवायबल प्रोजेक्ट तांको पई की ठीक अछि आ तार लेटेस्ट एप्लीकेशन एबे कोउतरे ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट रे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास एनआईएलटी एटा गोटे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट अचीविंग 100% literacy in primary schools. Ladakh is the first union territory to achieve full functional literacy under this program. It focuses on foundational literacy, critical life skills, and vocational skills for adults aged 15 and above. The program primarily relies on traditional classroom teaching methods. Avidru koda correct. First कहला एटा गोटे state sponsored scheme. No, this is a centrally sponsored scheme. State sponsored no focus on adult literacy, not just schools. एटा incorrect हे गला. Incorrect हे गले हमर आंसर ऑलरेडी आसी होची बट स्टिल हम तीनटा का स्टेटमेंट डिस्कस करबा. लद्दाख होची फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर दिस प्रोग्राम. तो एटा करेक्ट. ए फैक्ट ता मने रखिबा कि लद्दाख होची प्रथम यूनियन टेरिटरी जे कि फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करिची अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ये कवर करूची फाउंडेशनल लिटरेसी क्रिटिकल लाइफ स्किल्स एंड वोकेशनल स्किल्स फॉर एडल्ट्स एज्ड 15 एंड अबव 15 प्लस इयर्स मानकु से कैटर करूची एटा भी ठीक अछि प्रोग्राम प्राइमरली रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग मेथड्स एटा भूल अछि काना एटा डिजिटल लर्निंग मेथड्स ऊपर रिलाई करूची वॉलंटियर बेस्ड डिजिटल लर्निंग मेथड्स मॉडल्स ऊपर भी रिलाई करूची नॉट जस्ट क्लासरूम टीचिंग दिस इज करेक्ट 2 and 3 consider the following statement about district mineral foundation DMFs are established in all districts of a state to ensure equitable distribution of funds for development statement number 2 कहला प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY is implemented through DMFs to cater to the welfare of people and areas affected by mining. आ भितरु को स्टेटमेंट दीटा भितरु करेक्ट अछि फर्स्ट स्टेटमेंट हमर कहिछि फर्स्ट स्टेटमेंट ता इनकरेक्ट अछि काहे ना जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस जो सेटअप हेइ जंती तोड़ा माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रे सेटअप हेइ जंती not all districts of the state second statement is correct काहे ना प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना गो इंप्लीमेंट होची थ्रू डीएमएफ्स जोटा को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस को जाउची फॉर वेलफेयर ऑफ अफेक्टेड पीपल ठीक अछि तो एठी हमें कोन मन रखिबा ई सब स्टेट रे नुहंती जो माने माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रे सेठी ही माने सेटअप हे चंदी नॉट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स दिस इज इनकरेक्ट आंसर अब आंसर इज डी 2 only the seher program sometimes appeared in news primarily because of financial literacy urban planning maternity benefit by climate smart agriculture easy question seher program रो तार फुल फॉर्म कोन seher program रो कि जानचंदी कि एडा गोटे दिस इज अ क्रेडिट एजुकेशन
एटा एटी ऑप्शंस भूल अछि गोटे जगह रे एटी टिके करेक्शन करिवे एटा गोटे क्रेडिट एजुकेशन इनिशिएटिव जोटा कि लॉन्च है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द्वारा मुझे शहर प्रोग्राम विषय रे कहि दउची डोंट लुक एट द ऑप्शंस ठीक अछि शहर प्रोग्राम होची गोटे क्रेडिट एजुकेशन इनिशिएटिव मैडम एटा ठीक अर्बन अछि प्लानिंग टा मैडम एटा अर्बन प्लानिंग टा लॉन्च करा मैडम जायछि हां हां अर्बन प्लानिंग सुनुछि टा मु एटा सेटा ता फुल नहीं फॉर्म नहीं टा अर्बन प्लानिंग नुहे सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक अर्बन एनवायरमेंटल फॉर रेसिडेंट्स ता फुल फॉर्म टा सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक अर्बन एनवायरमेंट्स फॉर रेसिडेंट्स एठी एक्सप्लेनेशन आपण मानको जोटा प्रोवाइड करा जायछि आगे एटा ताले एथरे भूल अछि तो मैडम फुल फॉर्म टा होची आउ थरे कहूची सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक अर्बन एनवायरमेंट्स फॉर रेसिडेंट्स व्हाटएवर ए क्वेश्चन टा गुडी मार्क करि देइथिबे आगे कहना शहर प्रोग्राम आउ गोटे अछि जोटा कि गोटे क्रेडिट एजुकेशन इनिशिएटिव जोटा कि लॉन्च करा जायछि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द्वारा and TransUnion CBIL जोटा कि इंडिया रे लॉन्च करा जायछि थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स तो एटा प्रोवाइड कोन करूची कि रिसोर्सेस प्रोवाइड करूची टू हेल्प वुमेन टू अंडरस्टैंड द क्रेडिट स्कोर्स से मतलब क्रेडिट केमती मैनेज करिवे सेति पई कि से रिसोर्सेस प्रोवाइड करूची क्वेश्चन नंबर 46 is marked 47 which of the following statement is correct regarding the Navu Manujaru program it provides farmer with the investment support for agriculture and horticulture crops aims to inculcate social harmony and constitutional values among children it gives safe and conveniently located accommodation for working women कि एटा प्रोटेक्ट करूची राइट्स ट्रांसजेंडर पीपल मानकर एंड देयर वेलफेयर क्वेश्चन नंबर 47 रीड क्वेश्चन नंबर 47 आ माने कोन ए टर्म रो माने कोन आ माने होची वी आर ह्यूमंस एटा कर्नाटका गवर्नमेंट रो गोटे प्रोग्राम जहार ऑब्जेक्टिव होची कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंस्टिल करबा सोशल हार्मनी इंक्लूसिविटी एगुडी को सब इंस्टिल करबा अमंग स्कूल चिल्ड्रन आंसर कोन हबो आंसर हबो बी एम्स टू इनकलकेट सोशल हार्मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द चिल्ड्रन एटा कर्नाटका गवर्नमेंट रो गोटे प्रोग्राम Which of the following statement regarding the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana correct अछि first launched in 2000 it is central sector scheme Ministry of Rural Development होची यार nodal ministry of this scheme आंसर कोन बारो
launched in 2000 एटा गोटे सेंट्रल सेक्टर स्कीम आउ स्टेटमेंट नंबर बी कौन कहला मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द स्कीम सेंट्रल सेंटर आकु लॉन्च करिया को प्लान करछन न्यूज रे कोन पाइतिला तार फोर्थ फेज टाकु लॉन्च करिया को प्लान करछंती ऑफ इट्स फ्लैगशिप रूरल रोड स्कीम जोटा को जाउची प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू कनेक्ट 50,000 habitations जो मानकर पॉपुलेशन अबव रही 250 इन प्लेन एरियाज and 100 in special category states with all weather roads. ठीक अछि एटा लॉन्च हेतला 2000 रे जहार ऑब्जेक्टिव होची कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा जिवो टू अनकनेक्टेड जो हैबिटेशंस रहिला जो रूरल एरियाज रहिले एटा गोटे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दिस इज रॉन्ग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री एटा ठीक अछि करेक्ट पचारची बी मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना रिसेंटली सीन न्यूज प्रपोज्ड बाय असम उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान डायरेक्ट क्वेश्चन अछि के प्रपोज करछन एटा ए पर्टिकुलर योजना द स्कीम इट इज प्रपोज्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट कीर्ति प्रोग्राम रो एठी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन A to provide financial support to established athletes, streamline grassroots talent identification for ages 9 to 18 on a single platform, बा international sports collaboration को promote करिबा की तरह focus solely rely रहउची urban sports development ऊपर कोन बार आंसर कीर्ति रो फुल फॉर्म कोन खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ठीक अछि जोटा कि एनविजन करा जायछि टू डेवलप गोटे इंटीग्रेटेड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन आईसीटी टूल्स एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ठीक अछि आउ तार एम कोन रहउछि कि स्कूल चिल्ड्रन मानु को से फोकस रे रखुछि बिटवीन 9 to 18 इयर्स जो माने रहिले नेशन वाइड स्कीम विल हैव टू मेन ऑब्जेक्टिव हमको ये आंसर एटी मिली जाइछि आंसर होछि बी streamlining the grassroots talent identification from 9 to 18 on single platform तो जो नेशन वाइड जो स्कीम टा रहिला तारा दीटा मेन ऑब्जेक्टिव रहइबो कि से प्रति कोण अनुकोण रु फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर टैलेंट को गोटे सिंगल प्लेटफॉर्म रे आनिबो एंड स्पोर्ट्स को गोटे टूल भाबरे से यूज करिबो टू कर्ब द एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग्स आउ बाकी जहाँ भी गैजेटरी डिस्ट्रैक्शन रोची सेथिरु भी एडिक्शन हटेबा पई स्पोर्ट्स को एज अ टूल यूज करिवो तो ऑप्शन नंबर बी विथ रेफरेंस टू निपुण भारत मिशन कंसीडर निपुण भारत मिशन लॉन्च करा जायछि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा देन स्टेटमेंट नंबर 2 फोकस ऑन फाउंडेशनल स्किल्स फॉर द लेबर फोर्स इन इंडिया कौन बार आंसर 1 only 2 only then both 1 and 2 neither 1 nor 2 करेक्ट पचाची फर्स्ट कहला कि लॉन्च कराई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च कराई तो एटा भी भूल गला फोकस ऑन फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया नहीं एटा इनकरेक्ट काहे तार फोकस नॉट ऑन वर्कफोर्स बट ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी and numeracy
को मानक पई कि चिल्ड्रन अप टू क्लास 3 जो मानकर एज 6 to 9 years. फॉर एग्जांपल तांकू पढ़ा जिवो टू रीड बेसिक सेंटेंसेस बा सिंपल मैथ करिया को दिया जिवो निपुण रो फुल फॉर्म कोन नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी बुझेला लॉन्च कराई छी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा फोकस होची तार एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टिल क्लास 3 पीएम श्री स्कीम एटा गोटे सेंट्रल सेक्टर स्कीम किछटा स्टेटमेंट देछि पीएम श्री स्कीम ऊपर कहिछि एटा गोटे सेंट्रल सेक्टर स्कीम आउ एस्टैब्लिश हेछि ओवर 14500 पीएम श्री स्कूल्स द स्कीम अलाइंस विथ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौन बार आंसर जो पीएम श्री स्कीम टा रहिला एटा होची गोटे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक अछि इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव तार कोन एतिकी स्कूल एस्टैब्लिश करिया किंतु जेतुटी सेंट्रल सेक्टर देछि एटा भूल हे गेला स्कीम अलाइंस विथ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एटा ठीक अछि तार गोल इट्स गोल इज टू ऑफर डाइवर्स रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस तो एटा अलाइन होची नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संगरे ऑप्शन नंबर बी with reference to Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut Scheme statement तीनटा देछि आ भितर कोटा करेक्ट पचारछि फर्स्ट स्टेटमेंट कहले कि एटा लॉन्च करा जायछि गवर्नमेंट द्वारा इन 2015 तार 2.0 वर्जन लॉन्च करा जायछि 2021 रे सेकंड स्टेटमेंट कहछि मिशन वाज ड्रॉन टू कवर 100 cities and towns with a population over 1 lakh statement number 3 कहले कि purpose of Amrut mission was to ensure that every household has access to tap with assured supply of water and sewerage connection. Only one, only two, all three, and fourth kon dala? Fourth कहला none. Answer kon habo? First statement कहला कि this is launched by government in 2015 आउ तार 2.0 version आसिला 2021 रे this is correct October 2021 रे तार 2.0 version आसिला अमृत 2.0 जहार बिगर टार्गेट थिला यूनिवर्सल वाटर सप्लाई करिवो इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स बा कवरेज ऑफ सीवरेज हबो excuse me mission was drawn to cover 100 cities and towns with a population over 1 lakh एटा इनकरेक्ट अछि काना एटा गोटे अनलाइक स्मार्ट सिटीज मिशन जोटा कि 100 सिटीज को से टारगेट करूची अमृत कवर्स 500 सिटीज इनिशियली आ जो मानकर भी सेमति भी ग्रेटर देन 1 लाख पॉपुलेशन थिला and some state capitals with less so 100 is wrong here initially se 500 target करतला और condition एया थिला the purpose of amrut mission was to ensure that every household has access to tap with assured supply of water and a sewerage condition this is correct एटा है तो तारा aim amrut mission रो only two किस्टा स्टेटमेंट देछि प्रोजेक्ट परी ऊपरे कहिछि कि इट एम्स टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड एनेबलिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन स्टेटमेंट नंबर बी कहला इट सीक्स टू ब्रिंग फोर्थ पब्लिक आर्ट that draws inspiration from millennia of artistic heritage statement number c कहला in the indian army it is the indian army's extensive humanitarian assistance and disaster relief operation for kerala landslide statement number d कहला it is an experimental scheme to induct women officers in all combat roles in the armed forces project pari कोन गोटे क्वेश्चन स्किप हे गला कि ऊपरे हां अच्छा आ परे हमें 54 टा डिस्कस कर दवा
What is project Pari? Project Pari होउची एटा गोटे पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव. Public art initiative under आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन. ठीक अछि. तो एथिरे कोन अणा जाउतले म्यूरल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पब्लिक प्लेसेस को अणा जाय टू सेलिब्रेट इंडिया's कल्चरल एंड आर्टिस्टिक लेगेसी. ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर. 54 टा स्किप हे गला. हां 54 कोन देतला विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम. आ भितर कोटा तार गोटे फीचर नुह. जो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम रहला फर्स्ट स्टेटमेंट कहले कि VDGs आर फॉर्म्ड इन आइडेंटिफाइड वल्नरेबल विलेजेस. And second statement कहला VDG members are given arms and ammunition. Third कहला village runs in all the scheme runs in all states and union territories in India. And VDGs are led by a retired officer. Village defense guards. ये जो particular scheme टा it is specific to जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जो बॉर्डर और टेरर अफेक्टेड एरियाज रहिले. जो VDGs रहिले दे आर फॉर्म्ड इन वल्नरेबल विलेजेस. दे आर फॉर्म्ड इन वल्नरेबल विलेजेस. तो एटा करेक्ट अछि. एथरे पचार छी इनकरेक्ट बा नॉट कोन. एटा तो करेक्ट अछि. VDG मेंबर्स आर गिवन आर्म्स एंड एम्युनिशंस. एटा भी करेक्ट अछि काना सेल्फ डिफेंस पई तंग दिया जाई छी. देन सी कहला कि दे आर लेड बाय रिटायर्ड ऑफिसर और एक्सपीरियंस्ड लोकल. ठीक अछि. Scheme runs एटा भी करेक्ट अछि. Scheme runs in all states and union territories in India. एटा भूल अछि. Not all states and UTs. So technically option C question हिसाब रे करेक्ट हबा काना बाकी तीनटा करेक्ट अछि. आ क्वेश्चन पचारछि कि नॉट करेक्ट कोटा कोटा इनकरेक्ट हबा. नॉट अ की फीचर. ऑप्शन नंबर सी हबा. प्रधानमंत्री G1 योजना recently seen in news that promote कोन करूची. First option healthy eating habits, care for older people, advanced biofuels की inclusive insurance. आंसर अब आंसर होची सी. प्रधानमंत्री जीवन योजना ये प्राइमरली प्रमोट करूची एडवांस्ड बायोफ्यूल्स. जैव ईंधन वातावरण अनुकूल होची तार फुल फॉर्म जोटा गोटे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोफ्यूल स्कीम. तो एटा पर्टिकुलरली काहा को सपोर्ट करूची 2G जोटा सेकंड जनरेशन इथानॉल प्रोजेक्ट्स रहिला. सेकंड जनरेशन इथानॉल प्रोजेक्ट जोटा कि क्रॉप रेसिड्यूज रो निया जाय जेमति कि पैडी स्ट्रॉ बा गैस कॉटन स्टॉक क्रॉप रेसिड्यूज रो सेगुडा निया जाय. तर एम कोन ए स्कीम रो व्हाट इज द एम. एम होची टू रिड्यूस द स्टबल बर्निंग, increase the ethanol blending with petrol. So 57th question, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, consider the following statements. First statement कहले कि scheme will provide financial support to the middle class as well as impoverished urban families for building, buying and renting reasonably priced urban homes. Statement number 2 कहिछि कि eligible income criteria for EWS household होछि 6 to 9 lakhs. प्रधानमंत्री अर्बन योजना 2.0 विषय रे पचारछि. आ पचारछि आ भितरु कोउटा होछि करेक्ट आंसर. फर्स्ट स्टेटमेंट कहला कि एटा अनाउंस होछि बजट 24-25 रे कि हाउसिंग सपोर्ट मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज मानक पई एक्सपैंड करा जाऊ फॉर बिल्डिंग, बाइंग एंड रेंटिंग अफोर्डेबल होम्स. ठीक अछि. एलिजिबल इनकम क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसहोल्ड इज 6 to 9 lakhs. एटा इनकरेक्ट अछि. EWS इनकम लिमिट रहिछि अप टू 3 lakhs not 6 to 9 lakh. एटी फिगर टा इनकरेक्ट अछि. तो आंसर अब ए ओनली.
Which of the following statement are correct regarding the mission Karma Yogi? First statement कहूची कि it aims to create a future ready civil service with the right attitude, skill and knowledge. Second statement कहला कि the program emphasizes on site learning and on-site learning and traditional classroom training methods. Third statement is the mission focuses exclusively on training and development of senior bureaucrats. What is mission Karma Yogi? First statement is correct. Kind of mission Karma Yogi hochi eta gote national program for civil services capacity building for capacity building जो कि future ready bureaucracy से माने ready करिवे with right skill mindset and digital learning. तो एटा पूरा ठीक अछि. Program emphasizes on site learning and traditional classroom training method. एटा incorrect काने सेटा classroom learning ऊपर rely करूनी. It uses IGOT digital platform for e-learning. This is incorrect. The mission focuses exclusively on training and development of the senior bureaucrat. No, this is incorrect. काइना केवल senior bureaucrat ही नुहंती. प्रति level रो official को ये target करूचे. The answer अब one only. कही centrally sponsored scheme ऊपर किछटा statement देजी. Centrally sponsored schemes where the union government provides complete funding and state government are responsible only for implementation. Bijal committee report of 1987 provides for definition of the CSS. Answer kon habo? Answer first the incorrect habo. Kaina partly funded by center and partly funded by state. Eta incorrect hejibo. Then Bijal committee report 1987 provides the definition of CSS. This is correct. So option B ta correct habo. जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम कहली सीएसएस फंडिंग शेयर अब सेंटर आउ स्टेट भितरे फंडिंग तो सेतरे कोन होची 60-40 रे शेयर हे पारे बाय 90-10 रे भी शेयर हे पारे इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आ जो थरे फुल फंडिंग दिया जाउची सेंटर द्वारा ताको कोआ जाउची सेंट्रल सेक्टर स्कीम नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. With reference to national mission for clean Ganga, which of the following statements are correct? It was registered as a society in 2011 under the Societies Registration Act 1860. Second statement kahichi, it has two-tier management structure comprising governing council and executive committee. Code dechi avidru quota correct. Statement 1, this is correct. Canada register Hitler as a society in 2011 under this act, Societies Registration 1860. Eta correct achi. Statement 2 कहिछि कि एटा two tier द्वारा गवर्न करा जाय मैनेज करा जाय. गवर्निंग काउंसिल अछि तार एग्जीक्यूटिव कमिटी भी गोटे अछि. गवर्निंग काउंसिल रे कोन निया जाउछि पॉलिसी डिसिजंस निया जाउछि एंड एटा के चेयर करंती यूनियन मिनिस्टर चेयर करंती. आ तार एग्जीक्यूटिव कमिटी रे आर काम होची इम्प्लीमेंटेशन. गवर्निंग काउंसिल डिसीजन नबो एग्जीक्यूटिव कमिटी इम्प्लीमेंट करिवो ताको. ठीक अछि. आ जो एनएमसीजी टा कोन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एटा होची ओडे इम्प्लीमेंटिंग आर्म ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम जोडा थिला 2014 रो. With reference to UDAN, Ude Desh ke Aam Nagarik initiative, consider the following statement. Eta gote initiative to improve infrastructure connectivity in India. Then, first UDAN flight was inaugurated in 2017, connecting Manipur to Delhi. This is correct. Canada Samaste Janchandi, it was initiative to improve the air connectivity in smaller towns
by making air travel affordable. ठीक अछि एटा करेक्ट है जो फर्स्ट उड़ान फ्लाइट जोटा इनागुरेट हेतला 2017 रे कनेक्ट करतला कनेक्टिंग मणिपुर टू दिल्ली दिस इज इनकरेक्ट काना फर्स्ट उड़ान फ्लाइट जोटा 2017 रे इनागुरेट हेतला it was from Shimla to Delhi not Manipur to Delhi one only PM Vani scheme recently in news aims to PM Vani scheme ra aim kono what is PM Vani Prime Minister Wi-Fi access network interface एटा होजी PM वाणी जोटा कि 2020 रे आस्तला तार एम कोन कि वाईफाई कवरेज को पब्लिक वाईफाई को एक्सपांड करा जाउ ता कवरेज को थ्रू PDO होजी पब्लिक डाटा ऑफिस विदाउट लाइसेंस फीस इंक्रीज द इंटरनेट कनेक्टिविटी तो एटा कोथरे हेल्प करिवो फॉर द डिजिटल इंडिया रे हेल्प करिवो रूरल इंटरनेट एक्सेस रे हेल्प करिवो एंड स्टार्टअप बूस्ट करिया रे भी हेल्प करिवो So PM Vani होची इंटरनेट कनेक्टिविटी via Wi-Fi hotspots. With reference to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, consider the following statements. एटा गोटे financial inclusion initiative launch हेतला 2014 रे. There is a requirement of maintaining a minimum balance of rupees 500 in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts. दीटा को statement भितर कोटा correct हबो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव एटा समस्त जानथिबे कि जोटा 28 अगस्त 2014 रे लॉन्च हेतला बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर एम होची टू ब्रिंग एवरी हाउसहोल्ड इनटू बैंकिंग सिस्टम जोटा कि तांको एक्सेस दिया जो बैंक अकाउंट को डेबिट कार्ड इंश्योरेंस पेंशन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जहा रहइला ठीक अछि आ स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट अछि काइना एटा जीरो बैलेंस अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट दे आर जीरो बैलेंस अकाउंट्स सेति पई कोनोसी मिनिमम बैलेंस दरकार नाही तो one is correct consider the following statement regarding the reset program exclusively designed heji for retired sports persons aged between 20 to 50 years who have participated in or received medals in international events only option second statement कहला कि the program offers different level of training based on the educational qualification of the participants and it includes both self-paced learning and on ground training statement 1 टा incorrect अछि reset माने कोन reset होची reskilling through education skilling and training एटा केवल रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन बा मेडल विनर्स मानक पई नुह एटा एथलीट कोच स्पोर्ट्स स्टाफ सपोर्ट स्टाफ को भी कवर करूची आउ कैरियर ट्रांजिशन तांको प्रोवाइड करूची आफ्टर स्पोर्ट्स सो दिस इज इनकरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट टा करेक्ट काइना हा रिसेट इट प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स tailored to the participants education ठीक अछि फॉर एग्जांपल गोटे एथलीट जे कि बेसिक स्कूलिंग तांकर हेची मे गेट कंप्यूटर लिटरेसी और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जते बेले कि जने जदी ग्रेजुएट हेतिबे ताको एडवांस मैनेजमेंट और डाटा एनालिसिस सिखा जिवो ट्रेनिंग दिया जिवो तो ट्रेनिंग ता ब्लेंड होची ट्रेनिंग इज ब्लेंडेड और ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग भी अछि और प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स भी अछि एटा ठीक अछि विषाणु युद्ध अभ्यास mock drill on pandemic preparedness is conducted under which mission of India
कौन हबार आंसर एटा गोटे मॉक ड्रिल ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को मिशन अंडर रे एटा कंडक्ट हेतला फर्स्ट नेशनल हेल्थ मिशन नेशनल एनिमल हेल्थ मिशन नेशनल वन हेल्थ मिशन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा अंडर रे एटा हेतला कंडक्ट एटा गोटे 5 डे मॉक ड्रिल थिला ठीक अछि आ ए ड्रिल टा कोठी हेतला अजमेर राजस्थान रे हेतला आ इट कम्स अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन Which of the following schemes are subsumed under the Samagra Shiksha Abhiyan? समग्र शिक्षा अभियान अंडर रे को स्कीम आसुची सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टीचर एजुकेशन मिड डे मील स्कीम कोडा आसुची एबे करेंटली ए स्कीम अंडर रे सबस्यूम हेची एसएसए जोटा कि सर्व शिक्षा अभियान जोटा कि गोटे यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन स्कीम देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान करेक्ट आंसर पचारची एटा भी आसुची एंड टीचर एजुकेशन भी आसुची मिड डे मील स्कीम एटा समग्र शिक्षा अभियान रो पार्ट नुह एटा सेपरेटली पीएम पोषण स्कीम अंडर रे आसुची आंसर हबो ए Consider the following statements with reference to the Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana. Eta gote voluntary contribution, voluntary and contributory pension scheme. Statement number 2. Our eligibility रही small and marginal farmers सेमानकु मिलिबो गोटे monthly fixed monthly pension मिलिबो of rupees 5,000 after attaining the age of 65. कोडा करेक्ट हबो स्कीम रो ना होची प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एटा गोटे वॉलंटरी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जोटा कि 2019 रे आसीतिला फार्मर सेमानकु 55 to 200 रुपीस दिया जिवो डिपेंडिंग ऑन देयर एंट्री एज मैच्ड बाय गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 60 एज अटेंड करि गला परे तांगु 3000 पर मंथ दिया जिवो तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट कहीं ना पेंशन 3000 पर मंथ हे जिवो नॉट 5000 स्टार्टिंग एट एज 60 नॉट 65 आंसर इज ए ओनली with reference to the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, which of the following statement are correct? Scheme ta Ministry of Rural Development द्वारा launch ହେଇଛି एटा correct this is correct answer पचारछि beneficiaries are provided financial assistance of 5 lakh in plain areas and 2.30 in hilly areas नाही एटार भूल अछि ऊपर भी हमें डिस्कस करथिले सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 1.20 होची प्लेन पाई की 1.30 होची हिली एरियाज पाई की with reference to the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Arogya Yojana consider the following statements first statement कहला कि world largest publicly funded health insurance assurance scheme providing 20 lakh
annual coverage. So এটা incorrect. This is not 20 lakhs. This is 5 lakhs. Household included are based on the deprivation of occupational criteria of socio-economic caste census 2011. This is correct. जो beneficiaries जिबे से माने identify करा जिबे based on the SCCC 2011 socio-economic caste census deprivation by occupational criteria द्वारा. Statement 3 is correct. It covers up to 3 days of pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses such as diagnostic or medicine. Statement 4 कहला कि implement है in all states except Gujarat and Rajasthan. এটা incorrect kana it is implemented in all states. Gujarat और Rajasthan भी participate करिवे. Answer above given are correct. 2 and 3. मिशन मौसम पे यूनियन कैबिनेट एबे 2000 crore से अप्रूव करिसंदी गोटे आउटले 2000 crore रो over 2 years. Which of the following ministries will be the nodal body implementing the mission? मिशन मौसम recently cabinet से अप्रूव करिसंदी मिशन मौसम with 2000 crores outlay जहार नोडल मिनिस्ट्री होचंदी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. आ तार एम कोन ए मिशन रो एम होची कि जो वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग रहिला डिजास्टर प्रिपेयरनेस रहिला वेदर बा क्लाइमेट फोरकास्टिंग हैला बा डिजास्टर प्रिपेयरनेस हैला मॉनसून प्रेडिक्शन हैला बा ओशन मॉनिटरिंग हैला ताको इंप्रूव करिबा. ठीक अछि. आंसर अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इज द नोडल बॉडी. Sarathi app recently launched by the Open Network for Digital Commerce is mainly aimed at कोथि पई की सारथी ऐप टा लॉन्च करा जायछि बाय ONDC. कोथि पई लॉन्च करा जायछि टू हेल्प द सेलर्स easily create buyer side apps in multiple Indian languages. एइति कि ए ऐप टा क्रिएट करा जाय तार पर्पस होची कि जो डिजिटल कॉमर्स रही ताको डेमोक्रेटाइज करा जाऊ जो स्मॉल बिजनेस माने अछंती विलेजेस रे सेठी ताको डेमोक्रेटाइज करा जाऊ सो दैट से माने कोन करि परिबे से माने वाइडर मार्केट से ताको प्रोडक्ट सेल करि परिबे विदाउट नीडिंग इंग्लिश और टेक एक्सपर्टीज. Helping business create multilingual buyer apps. Which of the following not a feature of the create initiative? जो create initiative रहिला जहाकू इनागुरेट करा जायछि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द्वारा इन ले आ भितरु तार कोडा गोटे फीचर नुह. पश्मीना वूल रोविंग फैसिलिटी, बी ट्रेनिंग फॉर बायो प्रोसेसिंग ऑफ लोकल यूनिट्स, C development of solar energy production units, or D essential oil extraction from roses and other flowers. Answer above C development of solar energy production units. And a creator of full form which is Center for Rural Empowerment through appropriate technology and enterprises under MSME ministry. तो एटा फोकस करूची तो लोकल लाइवलीहुड ओरिएंटेड फैसिलिटी रहिला ले रे ता ऊपर फोकस करूची. आवर की कंपोनेंट रहिची पश्मीना वूल रोविंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग इन बायो प्रोसेसिंग ऑफ लोकल यूनिट्स भी तार गोटे कंपोनेंट रहिची. फॉर एग्जांपल किछि गोटे फ्रूट हे गला लद्दाख रे फॉर एग्जांपल एप्रिकॉट तो लोकल माने ट्रेन हेबे कि ता भितरु से फ्रूट रु से माने जूस जैम्स बा ताको सुखै की बा ड्राई फ्रूट भाबरे ताको करि की केमिति बिकी परिबे. एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रोजेस एंड अदर फ्लावर्स
एटा भी तार गोटे कंपोनेंट एथिरे एरोमेटिक इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलुची यूजिंग लोकल फ्लोरा किंतु सोलर एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव सो आंसर अब टेक्निकली सी व्हिच इज रॉन्ग एनपीएस वात्सल्य स्कीम रिसेंटली सीन न्यूज मेनली फोकस ऑन कहा ऊपर फोकस करूची सिक्योरिंग द फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन एटा कहा द्वारा लॉन्च होईची पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आर फोकस रही जो माने 18 वर्ष रु कम रे जो छुआ माने रहिले चिल्ड्रन बिलो 18 इयर्स ताकर पेरेंट और गार्डियन से माने गोटे अकाउंट क्रिएट करि परिबे अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम आ तार ऑब्जेक्टिव कोन कि लॉन्ग टर्म सेविंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी छुआ मानकर सेटा सिक्योर हबो सिक्योरिंग द फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन समग्र शिक्षा सेंट्रली एटा गोटे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम recently even news re अछि scheme t this scheme is in accordance with which of the following SDG correct answer is SDG 4 SDG 4 कोन एटा समग्र शिक्षा अभियान कोन शिक्षा means education and SDG 4 एतरे कोन अछि quality education ठीक अछि तो एता आर एम कोन गोटे इनक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर्म करिबा यूनिवर्सल एक्सेस दबा फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th यूनिवर्सल एक्सेस दिया जबो एजुकेशन पई एंड लर्निंग आउटकम्स ऊपर फोकस रहइबो Consider the following statement with reference to the Rangin Machli app. It provides multilingual information on popular ornamental fish species in 22 Indian languages. Statement number 2, one of the key features is the Find Aquarium Shops tools, which allows users to locate nearby aquarium shops. I will quote correct haba. समस्त पढ़ी देले देन ए जो ऐप टा अछि आकु किए लॉन्च करछन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से ए ऐप टी को लॉन्च करछन जोटा कि डिजाइन हेछि टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द ऑर्नामेंटल फिशिंग सेक्टर on popular ornamental fish species in 22 Indian languages ए जो ऐप टा हेछि एटा मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूची जो पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिश रहिले in 8 languages it is 22 कहला एटा 8 हबो तो एटा भूल हे जिवो one of its key feature is the find aquarium shop tool which allows user to locate nearby aquarium shops this is correct ये गोटे ए फीचर टी ये ऐप रे प्रोवाइड करा जाउची जोतरे यूजर माने तांको पाखा पाखी एक्वेरियम शॉप को लोकेट करि परिबे Consider the following statement regarding the food import rejection alert FIRA developed by the Food Safety and Standard Authority of India ए जो फीरा ये प्रोवाइड करछि गोटे ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैकिंग फूड कंसाइनमेंट्स रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस विद द इंडिया's फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नंबर 2 कोन गेला द सिस्टम एम्स टू स्ट्रेंथन द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बाय नोटिफाइंग ओनली फूड इंपोर्टर्स अबाउट द रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स कोन अबार आंसर 1 2 बोथ की नीदर करेक्ट आंसर 50 एटा को एफएसएसआई द्वारा क्रिएट करा जाईची एठी मेंशन अछि एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कोन पई काइना एटा गोटे ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म एटा ठीक अछि जोटा कि फूड कंसाइनमेंट जोटा रिजेक्ट कर दिया जाउची जदि कोनोसी फूड कंसाइनमेंट इंडियन स्टैंडर्ड हिसाब रे मैच करू नाही ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस ताको रिजेक्ट कर दिया जाउची तो सी ताको ट्रैक करूची इट इज ए ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म दैट ट्रैक्स द फूड कंसाइनमेंट एटा करेक्ट अछि
statement aims to strengthen the risk management system by notifying only food importers about the rejected products. एटा भूल अछि काहे कि एटा खाली इंपोर्टर्स मानक पई नो एटा गोटे पब्लिक ट्रांसपेरेंसी टूल हिसाब रे काम करूची जोटा कि पॉलिसी मेकर बिजनेस कंज्यूमर समस्त पई एक्सेसिबल. Consider the following statement with reference to the National Supercomputing Mission. एटा 2015 रे लॉन्च हेतला बाय नीति आयोग. Mission aims to boost India's supercomputing infrastructure amid increasing demand in sectors such as academia, researchers, MSME and startups. एटा 2015 रे लॉन्च हेतला सता बट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी प्लस डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉट नीति आयोग. तो एटा भूल हे गला. तार गोल कोन गोटे स्ट्रांग सुपर कंप्यूटिंग इकोसिस्टम इंडिया रे फॉर्म करिबा जोटा कि एकेडमिया रिसर्चर एमएसएमई स्टार्टअप समस्त को टार्गेट करूतिबा. किस्टा एग्जांपल भी जदी हमें देखिबा एठी सुपर कंप्यूटर रो रोजी परम परम शिवाय परम सिद्धि एगुडा रैंक्ड अमंग द टॉप सुपर कंप्यूटर्स. तो आंसर हबो बी. Which of the following clearances can be obtained using the Parivesh portal? Environmental clearance मिलिबो कि forest, coastal regulatory zone clearance, wildlife clearance. आबिद्रु को clearance टा मिलिबो through Parivesh portal. Answer हबो all of the above. सबु जको clearance ए पर्टिकुलर पोर्टल थ्रू रु मिली परिबो. एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिली परिबो, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिली परिबो, कोस्टल रेगुलेटरी जोन क्लियरेंस भी मिली परिबो, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी मिली परिबो. परिवेश माने होची प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब. एटा गोटा ऑनलाइन सिस्टम जोटा जोथरे की एनवायरमेंटल फॉरेस्ट कोस्टल रेगुलेटरी जोन आउ वाइल्ड लाइफ रो क्लियरेंसेस मिले. आंसर हबो डी. Consider the following statements regarding Bharat Gen. Bharat Gen ऊपर क्वेश्चन अच्छे. First statement कला Bharat Gen focuses on developing multilingual and multimodal AI models to promote India's linguistic and cultural diversity. Then it is launched under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems of the Department of Science and Technology. 79th question. भारत जेन होची एटा होची वर्ल्ड रो फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टीमोडल एलएलएम इनिशिएटिव जोटा कि लॉन्च करा जायछि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा. It is launched under the National Mission of Interdisciplinary Cyber Physical System under a launch करा जायछि of the Department of Science and Technology. एटा करेक्ट अछि. भारत जेन focuses on developing multilingual and multimodal AI models to promote India's linguistic and cultural diversity. तार एम कोन कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी रहिला आ जो सिटीजन मानकर एंगेजमेंट रहिला ताको एनहांस करा जिवो by developing the foundational model of language speech एउडा सब कंप्यूटर विजन मल्टीलिंगुअल और मल्टीमोडल फाउंडेशनल मॉडल भी तार वन ऑफ इट्स की फीचर. एटा भी ठीक अछि. सो बोथ आर करेक्ट. राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू. राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो अछि
ये जो कैंपेन टी कोथ पाई की rehabilitate the homeless and destitute persons and provide them with suitable sources of livelihood, release of sex workers from their practice and provide them with the alternative sources of livelihood. C. Eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers. But D. Release of bonded laborers from their bondage and rehabilitate them. Correct option habo C. Eradicate manual scavenging and rehabilitation scavengers. It is a national campaign, Rashtriya Garima Abhiyan. It is a national campaign against manual scavenging. With reference to Swachh Bharat Mission. Eta 2014 रे launch hitla. Our goal रही goal of achieving universal sanitation coverage by 2019. Swachh Bharat Mission Urban 2.0 2023 रे launch ହେଇଛି to ensure that treatment of both liquid and solid waste is achieved through the help of technology. कौन अब आंसर? जो SBIM रहिला स्वच्छ भारत मिशन अभियान एटा 2 अक्टोबर 2014 रे लॉन्च हेतला आ गोल थिला तार ODF इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया अचीव करिबा बाय 2019 जोडा कि 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी. एटा ठीक अछि. स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. काना 2021 रे एटा लॉन्च हेतला नॉट 2023. So option A is correct. With reference to PM Janajatiya Unnat Gram Abhiyan, consider the following statements. First statement kala scheme aims to address the gaps in the social infrastructure. Approximately 63,000 tribal villages. Then kala the scheme has the duration of 5 years. Third kala PM Gati Shakti portal will be leveraged for monitoring the scheme's progress. Answer कौन अब? Answer अब all of the above. केमती कना एटा ठीक अछि कि एटा इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस गैप को ब्रिज करिवा पई कि आर स्कीम को एम करा जाइतला इन 63,000 ट्राइबल विलेजेस मानकर नंबर भी ठीक अछि. स्कीम हैज ड्यूरेशन ऑफ 5 इयर्स एटा भी ठीक अछि. आउ मॉनिटरिंग विल यूज द पीएम गति शक्ति पोर्टल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जांपल गोटे स्टेट रे गोटे ट्राइबल विलेज अछि आ ए स्कीम ता सेटी इंप्लीमेंट हेले इट मे हेल्प देम ब्रिंग द बेटर हेल्थ केयर सेंटर हेला स्कूल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यूजिंग रियल टाइम ट्रैकिंग थ्रू द पीएम गति शक्ति पोर्टल. All of the above are correct. Consider the following statements with reference to the Nikshay Poshan Yojana NPY. NPY Nikshay Poshan Yojana. First कहला कि एटा गोटे सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन. Wrong. It is not a central sector. एटा होची गोटे Nikshay portal. This is 83 number question. Yes, Nikshay portal ऊपर question अछि. हाँ, it is a central sector scheme under the national health mission. एटा गोटे central scheme under the national TB elimination program, NTEP, not national health mission. So this is wrong. All notified tuberculosis patients are beneficiaries of this scheme. एटा करेक्ट कना सबु जक नोटिफाइड टीबी पेशेंट जो माने कि दे विल गेट केते टका पाइबे ₹500 per month till treatment completion. So this is correct. B only. With reference to the Atal Pension Yojana, consider the following statements. Age of the subscriber should be between 18 to 40 years heitiva darkar. A subscriber got a guaranteed minimum monthly pension tanku milibo after the age of 65 years depending on their contribution. The statement 1 is
correct. Statement 2 is not correct. Can I doubt 65? No, it doubt 60 years. No, one only is answer. With reference to Samarth, scheme for capacity building in textile sector, which of the following statement are correct? Scheme ta Ministry of MSME द्वारा launch करा जाइछि. Samarth scheme. And the scheme only focuses on reskilling programs to improve the productivity of the existing workforce in the textile sector. First statement is wrong. It a Ministry of Textiles द्वारा launch करा जाइछि, not Ministry of MSME. And the scheme only focuses on reskilling programs to improve the productivity of existing workers in the textile sector. Eta भी भूल अछि काहे ना it is not only about reskilling, एथरे skill development भी करा जिवो, training placement जो youth माने अछंदी textile sector रे तांकर करा जिवो. So neither 1 or 2. With reference to the regional connectivity scheme, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक 2016 रे लॉन्च हेतिला एटा, तो एटा पूरा ठीक अछि to improve the infrastructure and connectivity in India. This is absolutely correct. First Udan flight took off from in 2017 from Sikkim to New Delhi. No, eta Shimla habo. The scheme incentivizes airline to connect underserved regions by offering them support through the VGF, viability gap funding. Eta भी correct अछि काना airlines माने funding पाई परिबे through the viability gap funding for serving unprofitable routes. No? 1 and 3. Consider the following statements with the reference to Pradhan Mantri Mudra Yojana. Mudra Yojana eta 2015 रे launch हेतिला and loan up to 50 lakh मिलिबो to the non-corporate and micro enterprise. ठीक अछि. तो एथरे कहला कि एटा 2015 रे launch हेतिला. It will provide loan up to 50 lakhs to the non-corporate and micro enterprises. Eta bhul achi. Eta up to 10 lakhs, not 50 lakhs. Under it, loans are offered only in two categories, namely Sishu and Tarun. This is wrong. Kind of tinta category roibo. Gote roibo Sishu, gote Kishore, and Tarun. Eta be incorrect achi. Neither 1 nor 2. The primary objective of the PM Yashasvi scheme. PM Yashasvi scheme kono? Pradhan Mantri Young Achievers, S for scholarship, A for award, scheme for vibrant, I for India. Eta provide kurchi scholarship to whom? To OBC, EBC and DNT students. Our focus kono rochi ki jo education support rahila through DBT scholarship to streamline kara जाऊ. तो जो OBC student माने रहिले जो माने class 9 रे अछंदी से माने direct financial aid पाइबे. They will receive the financial aid to continue the studies. Answer kono habo? Streamline the educational support for social and economically disadvantaged students. Yuva AI initiative for skilling and capacity building. It recently launched करा जाइछि. कहा सहित collaboration करके. एटा जो Yuv AI initiative टा रहिछि. This is a collaboration between Meta plus Ministry of Electronics, METI plus AICTE. Meta, Ministry of Electronics and Information Technology, and All India Council for Technical Education. आउ तार एम कोन? What is the purpose? तार purpose होछि कि जो AI skilling और capacity building रहला youth मानक पई सेथिरे तांकू empower करा जाऊ आउ तांकू emerging tech skills संगरे तांकू train करा जाऊ तांकर capacity building करा जाऊ.
राज्य विशिष्ट योजना एटा जो लॉन्च हेची a particular scheme to reduce the stubble burning incidents, which among the following has launched it? को स्टेट को लॉन्च करछि? आको लॉन्च करछि हरियाणा। अब ये पर्टिकुलर स्कीम बा योजना रे होउछि कोन जो पंचायत माने रहिले तांको इंसेंटिवाइज करा जाउछि कि से माने क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट को अडॉप्ट करंतु जोटा कि स्टबल बर्निंग को फर्दर रिड्यूस करिवो। फॉर एग्जांपल जो विलेज पंचायत रहिले तांको कोन करे तांको रिवार्ड दिया जाउछि जदि से माने हैप्पी सीडर्स यूज करिवे इंस्टेड ऑफ बर्निंग द स्टबल तांको रिवार्ड दिया जिवो। Which of the following is a key objective of the Sanyukt Vimochan 2024 initiative? आ भितर तार की ऑब्जेक्टिव कोन ऑफ दिस इनिशिएटिव संयुक्त विमोचन 2024 इनिशिएटिव? Revitalizing ancient cultural heritage practices in India by encouraging financial inclusion and economic reforms. C. Advancing India's space exploration mission. D. Showcasing India's disaster response readiness. Answer about D. Showcasing India's disaster response readiness. एटा गोटे मॉक एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन इनिशिएटिव एटा गोटे मॉक एक्सरसाइज भलिया जो थरे कि इंडिया रो केते डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटीज जो रहिची ताकू डेमोन्स्ट्रेट करा जाउची आ एटा किए कंडक्ट करूचंदी एनडीएमए प्लस आर्म्ड फोर्सेस ताकू मिसकी कंडक्ट करूचंदी। फॉर एग्जांपल जॉइंट अर्थक्वेक रेस्क्यू ड्रिल हैला विथ फायर आर्मी एनडीआरएफ टीम से माने कंडक्ट करूचंदी। With reference to the Biotechnology Research and Innovation Council, consider the following statements. First statement कहला कि एटा एस्टैब्लिश करा जायछि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटा पूरा ठीक अछि। It was created by merging various autonomous institutions to promote unified governance in biotechnology research. एटा ठीक अछि काहे ना 14 टा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को यूनिफाई करा जाय कि गोटे यूनिफाइड गवर्नेंस मर्ज हे कि फॉर्म हेछि। One of the primary objective is to promote international collaboration in biotechnology without focusing on indigenous technology development. Eta wrong kaina eta promote korchi both indigenous and technology development और global collaboration भी eta promote करूची, not only this. आंसर कौन हबो? आंसर हबो 1 and 2.